kaha swaro aro krupaka sanata kaha dasa raghunata patita kaha mora bata juga kaha kavira kaha mora bata juga kaha kavira ekakale kota gela goranatara ekakale kota gela kota natara pasane kotibo mata anale pasibo pasane kotibo mata anale pasibo Goranga gunera nidhe kota gele pabo Goranga gunera nidhe kota gele pabo se sabha sangira sanghe je koilo vila se sabha sangira sanghe je koilo vila se sangana paya kande narotamoda se sangana paya kande narotamoda
Jaya Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur. Jaya Guru Maharaj, Guru Maharaj, Guru Maharaj, Jaya Guru Maharaj. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Paramatma, ready? Ready? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo bolo, Dorse. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare.
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jaya Guru Maharaj, Guru Maharaj, Guru Maharaj, Jaya Guru Maharaj. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Nitai Go Sitana Premanande. So now we'll be hearing a short class from our Guru Maharaj, and everyone's attention can be there. Like in India, for example, it is very common for everyone to think he has a spiritual master. But actually, neither the spiritual master is instructed in giving the rules of parampara, nor is the formality the disciple accepts a guru. So, this rare human body should be utilized for receiving spiritual instruction. Like in India, for example, it is very common for everyone to think he has a spiritual master. But actually, neither the master is instructed in giving the rules of parampara, nor is the disciple interested in following. But and it was in following. But just as a formality, like in India, for example, it is very common for everyone to think he has a spiritual master. But actually, neither the spiritual master is instructed in giving the rules of parampara, nor is the disciple interested in following. But just as a formality, the disciple accepts a guru. So, this rare human body should be utilized for receiving spiritual instructions through the disciplic succession. Krishna says in the Bhagavad-Gita, Evam parampara praptam iman rajasva vidu. This supreme science as it is come down through the disciplic succession. And if one receives the spiritual message without any adulteration or interpretation, then there will be the development of love of God. So in the Vedas, this vast material world is compared to an ocean, and this human body is compared to the boat that can enable you to cross the ocean. And the instructions of the Vedas are compared to the favorable winds that pushes the boat to cross the ocean. And the spiritual master has been described as the captain of the ship. As the captain of the ship, one who navigates the ship across the ocean. So, if one begs for spiritual instructions, if one is anxious to obtain genuine spiritual instructions, and if one takes advantage of these instructions, then one can make spiritual progress. In the material world, generally, one is always begging for. What is one begging for? Begging for facilities for sense enjoyment. And therefore,
Even if one has a spiritual master, or even if one belongs to a so-called religious faith, he is just hoping that he can still go on with sense enjoyment. In the Upadeshamrita, Rupa Goswami has given the qualification of who can become a spiritual master. It is not that just anybody, just to make some money or just to, have some followers, can become a spiritual master. Vacho vegam, manasa krodha vegam, jiva vegam, adara pasta vegam. Ethan, so one who can control the different pushings of the body, he is qualified to make disciples all over the world, according to Rupa Goswami Prabhupada. So Vachavega means to control the power of speech. The tongue should be used only to glorify the Supreme Lord or activities of the Lord. The devotee never gets tired of glorifying the Lord or activities of the Lord. Because the Lord is inexhaustible, and because His names are spiritual, unlike material names, one never gets tired of chanting those names. Just like in the Srimad Bhagavatam we see that even though Parikshit Maharaj was fasting to death, still in the 10th canto, Parikshit Maharaj begged Shukadeva Goswami, please describe further the transcendental glories of the Lord. Vega means pushing. So the body is always pushing. The senses are always pushing for sense enjoyment. But by engaging in the process of devotional service, one gains the ability to control the pushings of the body. So one controls the tongue, one controls the tendency of the tongue to speak by using the tongue constantly in glorification of the Lord. If the tongue is in control, then manasa krodaha vegam. Manasa krodaha means mind and anger. If the tongue is being used to glorify the Lord, then there's a very good chance that the mind will also be used to meditate on the instructions of the Lord and the form of the Lord. So the mind has to be made our friend. In the Bhagavad-Gita, 6th chapter, we see that Krishna, through a series of verses, is pointing out the importance of making the mind your friend. The mind that is constantly thinking about the mission of the spiritual master and the Lord is actually a friend. Last night I explained to you how a devotee on the process of Sharanagati accepts the Lord's interest to be his interest, and not that his interest should be the Lord's interest. So, when the mind is engaged in meditating on the mission of the Lord, that is called samadhi. So, samadhi is an art that has to be practiced by every devotee in this Krishna conscious movement. Just like when your devotees go out on Samkirtan. Now, the success in Samkirtan is actually based upon purity. If when one is out on Samkirtan, one is constantly meditating on the spiritual instructions that he has received and on the importance of delivering Krishna consciousness, then he will succeed in that mission. In the Chaitanya Charitamrita, it is explained that if one does not take advantage of this human form of life and cultivate God consciousness, then for millions of millenniums, he will not get a human birth again. So this means that when you are out preaching, you see a conditioned soul passing by. If you should be thinking, if I don't enthusiastically try and attract him to Krishna, then he could die at any moment. And if he dies without having taken to Krishna consciousness, then he will have to suffer for millions of births. If that is the line of meditation, then one will always be anxious to practice Krishna consciousness and to distribute Krishna consciousness. In the Bhagavad-Gita, Krishna says, those who worship me with devotion, I make up what they lack and I preserve what they have. And Rupa Goswami has also said that in order to succeed spiritually, one should be determined. So if we practice with determination, the capacity to think about the Lord, then even if there are some discrepancies, some weaknesses, the Lord who is within the heart will make up that deficiency. So we should never forget that the Lord is understanding all our desires. He is a silent observer. And Krishna is unlimited. So he will reciprocate with your desires. So if our desire is to learn how to meditate on Krishna, Krishna will help us definitely in achieving that goal. So the devotee is always thinking about how the mission of the Lord and the spiritual master can be realized. This was the meditation of Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj was constantly meditating how the mission of the Lord can be realized.
Prahlad Maharaj said, I'm not interested in going to the mountains or the forest. I'm interested in staying in the cities and giving Krishna consciousness to those who are trying to convert a position of distress to a position of comfort. So we have to cultivate the mentality that Prahlad Maharaj had. We all have to become Prahlad Maharajas. We all have to develop that same mentality to lament at the attempts of the materialist to convert distress to happiness. So, since the nature of the mind is to be very active, constantly absorb the mind in thinking, how can you give Krishna consciousness to everyone? That is why Chaitanya Mahaprabhu has specifically said, Jare dako tahe kaho Krishna upadesh. Whoever you see, please instruct him about Krishna. Whoever you see. Chaitanya Mahaprabhu did not say, only give Krishna consciousness to somebody who has a PhD degree or somebody who's wearing a nice suit and driving a big Volga car. So he said, give Krishna consciousness to everyone. So since the nature of the mind is to be active, engage the mind constantly in thinking, how can you give Krishna consciousness to everyone? So Prabhupada gave us many weapons for giving Krishna consciousness. One weapon he gave us was book distribution. Another weapon he gave us was Harinam. Another weapon he gave us was prasad distribution. Another weapon he gave us was deity worship. So these are various weapons that Prabhupada gave us so that we can give Krishna consciousness to the unfortunate entities. So our meditation should be, how can we employ these weapons which Prabhupada has given us to give Krishna consciousness to others? If you understand the importance of Krishna consciousness, then you will want to give Krishna consciousness and become Krishna conscious. Prabhupada said that devotee should think, I have no alternative but to become Krishna conscious. So when you have decided that there is no alternative for you, then you have to endeavor to become Krishna conscious. And an important element in becoming Krishna conscious is always being engaged in service to Krishna. As they say, an idle brain is the devil's workshop. So when you're constantly meditating on the service assigned to you, when you're constantly meditating that you have to become an instrument to deliver Krishna to everyone, then that meditation will take your mind away from poisonous thoughts and bring you closer to Krishna. So wherever the mind wanders, bring it back to Krishna. And practice the art of constantly fixing the mind on the instructions of the spiritual master and Krishna. It was Krishna's mission to establish dharma on this planet. It was Lord Chaitanya's mission to establish dharma on this planet. And it was Prabhupada's mission also to establish dharma on this planet. And the mission of all the present spiritual masters also is to help realize the mission that Prabhupada had. That is to help establish dharma on this planet. And we help establish dharma on this planet by making people understand what is dharma, what is religion. And you make people aware of what is dharma on this planet by making them read Prabhupada's books. Therefore, every devotee should consider in this Krishna conscious movement, since this Krishna conscious movement is a preaching movement, every devotee should consider how we can help expand the distribution of Prabhupada's books so that people can read it and understand what is dharma. And as I pointed out yesterday, one becomes dear to Krishna by engaging in activities of preaching. So then, krodaha. Krodaha means anger. Anger, generally people become angry when they don't get their quota of sense enjoyment. Devotee, however, becomes angry only when he sees that the mission of the Lord is being impeded or the devotee of the Lord is being criticized. Just like Lord Chaitanya became angry when he saw that Nityananda was attacked by Jagai and Madai. So then, jiva vegam udara pasta vegam. One must control his eating habits. Devotee eats only Krishna prasad. Even Krishna prasad, if you overeat or eat very late in the night or eat too many sweets, then again your spiritual life gets a little affected. Udara pasta vegam, control the belly and the genitals. So the tongue, the belly, the genitals, Bhaktisiddhanta Saraswati pointed out, are all in a straight line. So if the tongue is in control, then to control the other senses is relatively easy. So the genuine spiritual master must control these senses. And the genuine disciple must also learn to control these senses. And the various activities in the Krishna conscious movement are all aimed at helping you control these senses. Because when one is constantly absorbed in service to Krishna, then there's a good chance that the senses will act as friends and not as enemies. So the business of the disciple, as we understand from this verse and purport, is to constantly beg for spiritual instructions. And the business of the spiritual master is to repeat what he has heard from his guru.
Why do all the spiritual masters in ISKCON emphasize preaching and book distribution? Because Prabhupada emphasized this. And why did Prabhupada emphasize it? Because Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur emphasized it. And why did Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur emphasize it? Because Chaitanya Mahaprabhu emphasized it. So that is parampara. We repeat what we have heard without any adulteration. And when we link ourselves with the desires of the Lord, then one is automatically happy and peaceful. So Jagai and Madai, as we know, were engaged in very sinful activities. But when they came to Chaitanya Mahaprabhu said, I'm ready to accept you. But the condition is, you have to give up your sinful nonsense of the past. So Prabhupada said, that is our philosophy. We have to give up the nonsense of the past, and then Krishna will accept us. Not that you keep doing your nonsense and think Krishna will accept you. So, we should cultivate the mood of Parikshit Maharaj, beg for spiritual instructions so that we can all make spiritual advancement. Hare Krishna. So there's still 2 minutes left for 7 o'clock. I just wanted to once again request all the devotees. I see a lot of devotees. That is, even if you're not from Moscow, is this Lord Nrsimhadev marathon going on all over Russia or only in Moscow? All over? Yes. So all devotees who have come here from other cities, they should take advantage of Lord Nrsimhadev's festival and cultivate the spirit of the marathon. In Krishna consciousness, there are so many festivals. Only recently we celebrated Lord Chaitanya's birthday, isn't it? Then more recently we celebrated Lord Ram's birthday. Very soon you're going to celebrate Lord Nrsimhadev's appearance. So there are festivals regularly. Actually, these festivals are an opportunity for us to meditate more deeply on the various pastimes of the Lord and thereby purify ourselves. And the devotee is anxious to obtain the mercy of Lord Nrsimhadev. Why? Because Nrsimhadev protects his devotees. And we get the mercy by serving the Lord's desires. So I just want to request all the devotees to help distribute the knowledge that Prabhupada has given us, distribute these books. And all those devotees, if you come and distribute these books, then you'll really be happy and you'll help fulfill Prabhupada's mission. So how many devotees are going to go out for the Lord Nrsimhadev marathon today? So I see that many people don't have their hands up also. Are the other people busy? They have appointments with Yeltsin today? No. So why doesn't everybody take part in it? You have big stock of books, isn't it? Books is no problem. So they have big stock of books. Clear it out. It's so nice to see that the book distribution fever is really getting better all over this country and more people are buying these books. Prabhupada on many occasions said, there cannot be any material impediment to book distribution or Krishna consciousness. So even if the prices have gone up, don't worry. If you're sincere, Krishna will help you capture their hearts. Okay, so is everyone going to try and take part in the book distribution today? Tomorrow morning I'll check again how many people took part. Yeah. So everyone should give at least few books. If you can't go out all day, at least go out for 1 or 2 hours. If you go out even for 1 or 2 hours and distribute at least 2 or 3 books, imagine if 100 extra devotees go out, 200 extra people will get the books, 200 extra people get the books, at least 2,000 people will read the books, and these 2,000 people would have been saved from going to hell. Otherwise they are definitely on the path to hell. Okay? So is everyone going to take part? And even those who have to go to work and distribute a book on the metro. And if you can't give a big book, at least give a small book. But do something. And then on Lord Nrsimhadev's birthday, your name will be read to Lord Nrsimhadev, Prabhupada, Gaurnitai in front of all the devotees. And you want to know how you will get Lord Nrsimhadev's mercy? You want to know? Krishna, who is sitting in the heart, will make your determination for spiritual life even stronger. So when Maya is coming to tempt you, you'll be so determined that in one stroke, you'll just lift your hand and Maya will run away. Because your determination is weak now, when Maya comes close to you, you get scared. But when your determination is strong, then Maya will get scared. Maya will stand behind you, not in front of you. Right now, Maya is in front of you. But when you become determined, then Maya is always behind you. So you'll get Lord Nrsimhadeva's mercy and then Maya will come behind you. Okay? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare.
Maharaj, we warmly welcome everyone for today's most auspicious occasion. We are observing the second year anniversary Disappearance Day today, according to the TT, the Tirubab Titi Mahotsab of our Guru Maharaj. He passed away, left us physically about 2 years ago, and we are here gathered today to commemorate that most auspicious day. There's a mix of feelings, being he's not with us present physically, and also a feeling of joy because he is with Srila Prabhupada, along with his God brothers, continuously serving wherever Srila Prabhupada is to help the Sankirtan mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu, to spread the glories of the holy name, and to redeem the conditioned souls here in the material world. So as disciples of our Guru Maharaj, would like to thank also the God brothers of Guru Maharaj who are present here today and helping us to at least be able to stand and remember more of our Guru Maharaj. The God brothers of our Guru Maharaj are very dear to him, and he's always praising them and glorifying them with their services to our founder Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. So we welcome you all again from different parts of the world. I know many of our God brothers are here from different parts of the world, from different parts of India, and mostly different parts of Delhi. Haribo! So first of all, we'd like to start now the homages, glorification of our Guru Maharaj. We start with His Holiness Guru Prasad Swami Maharaj. Our Guru Maharaj specifically requested His Holiness to take charge of his zones. And we would like to thank His Holiness Guru Prasad Swami for taking that responsibility. This is not an easy task to, in a way, in a sense, he asked His Holiness to take care of us. And we cannot thank enough. We cannot repay how our Guru Maharaj chosen His Holiness Guru Prasad Swami Maharaj to do that. And with great humility, he did it for us. And he's still continuing to do it for us. So we cannot repay back His Holiness Guru Prasad Swami in that way. Hare Krishna. Hare Krishna. His Holiness Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Shri Krishna Balaram, Shri Radhe Shyam, Shri Gaurnitai ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. So,
I think the real reason that Gopal Krishna Maharaj asked me to work with him was because he would see I needed some service, so that's probably the main reason. So that's mercy. The mercy of the spiritual master is that he wants to see us all engaged. Just like Vishwanath Chakravarti Thakur, he says in his Guru Vastakam that the spiritual master is so merciful, so desirous, that he instructs the devotees how to care for the deity, clean the temple. His greatest pleasure, one of his greatest pleasures, is to see the devotees taking prasadam, taking Krishna prasadam. Not that he wants to see them eat and be healthy, he also wants that. But he says when they take prasadam, then they will become purified. So the spiritual master has no other desire and no other business in this world other than taking care of the devotees. And as we just heard in this wonderful class, that the main purpose of this Krishna consciousness movement is to distribute Krishna Chaitanya Mahaprabhu Namo Mahabhadanyaya Krishna Prema Pradayate, to give Krishna Prema. And so, and how do we get that Krishna Prema? We get it, Krishna Prema, even Krishna does not give Krishna Prema. He has his devotees give it. Because Krishna has to be impartial. He has to give the demons, he has to give the devas, he has to give everybody. Eko bahunam yo vidadati kaman. He has to give everybody what they need, what they want. And therefore, he instructs his devotees. Even Krishna Bhagavad-Gita says that one should not unsettle the minds of those who are materially attached. But the devotees take the risk. I'm not going to do what Krishna said. I'm going to do what Krishna wants. What Krishna says sometimes is for the good of humanity and everything. But what Krishna wants is that everyone goes back home, back to Godhead. So, as I've said many times, one of the most unique characteristics of His Holiness Gopal Krishna Maharaj was the fact that he wanted to do, he just said it right in this class. This is what Prabhupada said, and the main things that Prabhupada said so many things. None of us could do everything that Prabhupada said. All of us together can maybe accomplish or maintain what Prabhupada did and do what Prabhupada wanted. But he took the most essential, because the quality of the Guru, Hamsa, like the swan, is to extract the essence. And the essence of Srila Prabhupada's teaching, the maximum manifestation of his mercy, is to give Krishna consciousness, especially in the form of books, to everyone. And why are books so important? Because books, just like you can have something on your electronic screen, something about Krishna, then it goes away, then something else comes. But when you have a book, it's always there in its original form. And because that book is only for that purpose, the screen, the cell phone, they have so many purposes. But the book has one purpose, to give Krishna Prema. This is the purpose. And therefore, that's why he emphasized that this is what we need to do. We need to distribute these books. Just like here is Prithu Prabhu. And he was is, and was, and will be
one of the greatest promoters of book distribution. Haribo! Because anyone that really knows Srila Prabhupada, they know this is what Srila Prabhupada wanted. So His Holiness Gopal Krishna Maharaj, he understood this. This was his main emphasis. He just said, how many here will go out and distribute books today? You know? And so that was, he said that so many times, again and again and again. He wanted deity worship. Because when people come to our temples, when they go to other temples, they just come, they go to the altar, they get their blessings and go away. But because in ISKCON, we have the most beautiful deities in the world. You know? Because Srila Prabhupada instilled that devotion in his disciples. And his very, very accomplished disciples, like His Holiness, they are pushing this. The deity worship must be first class because that purifies the atmosphere and that attracts people. I've seen in our temples, you go to another temple, people offer some prayers or something. If they stay for long, it's just because they're offering Vishnu Sahasranam or something else. But in our temple, they just stand and looking at the deity, they don't even know what to say. You know? Many people, they offer some prayer and they can't take themselves away. So these are the things. And sadhana bhakti. Sadhana bhakti, because by sadhana bhakti, we can purify our existence. Chaitanya Mahaprabhu said that you don't need even initiation, even Purascharya to chant the holy name. But then Srila Prabhupada, in a very long purport, he says, because we are conditioned, and Jiva Goswami said this, because we are conditioned to be able to chant the holy name, we have to do sadhana bhakti. So this is why. This is parampara. Parampara means you find the essential characteristics of the teachings of the parampara and you give them to others. No? Just like we do many Vedic sacrifices, we did one very elaborate, beautiful sacrifice. But Chaitanya Mahaprabhu said, Yagyaya Sankirtana Prayaya. Prayaya, principally, almost completely. Anyone who has intelligence, they understand that it is for chanting the holy name of Krishna, and the best way to chant the holy name, to give that chanting to others. Harinam Sankirtan is one very good way, and Brihat Mridanga, you know, when the Mridanga becomes amplified by book distribution. So these are wonderful characteristics. I just mentioned that when His Holiness Gopal Krishna Maharaj began to come to the temple, the devotees were amazed. The devotees that were there, you know, these were Westerners who had, you know, just coming out of Maya. They were struggling with their senses, struggling with their mind. And he would come and he would offer his prayers to each picture. Just so absorbed. He was a business. He would come, offer prayers, chant Hare Krishna, and then go to work. You know? And everybody else was in the temple all day and struggling with Maya. So a very special personality. But especially, we celebrate in a grand way the appearance and the disappearance of the spiritual master. But in one sense, the disappearance is more important. Because as Janardana Maharaj just said, he passed away. But when an acharya passes away, he passes on. He passes on the legacy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. He passes on the legacy of Srila Prabhupada. And this legacy is our responsibility. When the spiritual master disappears, it's because Krishna wants to bring his devotee back home, back to Godhead. And number two, Krishna says, you've already done enough. Let them now come up to the standard. No. And now they must come up to the standard. So this is
When Prabhupada left, we were all bewildered. We thought, at least I thought, and many others also, what will happen to this movement now? We were in distress. But then we realized, just as I mentioned, when Krishna disappears, it increases the enthusiasm, the love, the remembrance of his devotees. So when the spiritual master disappears, we focus on what he wanted, on what he desired, on his mission. And as I've said many times, and I'll say it again and again, that the beauty of His Holiness Gopal Krishna Maharaj is that his mission was Prabhupada's mission. He didn't have his own mission. And this is how this movement will remain intact. If we have one mission, that one mission is established by Srila Prabhupada's teachings, Srila Prabhupada's books, Srila Prabhupada's example. And surrendering to Krishna. Just as Maharaj just said, control the senses, control the mind. Then you can do devotional service. If your mind is uncontrolled, if your senses are, you can't do devotional service. You can just come to the temple and pray that Krishna will be merciful to me, even though I'm in a fallen condition. But if we remain engaged in devotional service, and we keep focused on the spiritual master, and we follow all the instructions in Srila Prabhupada's books, then we will carry on the legacy. It's not his legacy, it's Srila Prabhupada's legacy, which becomes his legacy, and which will become your legacy, and which will become the legacy of so many devotees, to maintain this Krishna consciousness movement. Why did he initiate so many devotees? To bring them together under one banner of Krishna consciousness, which is the banner of Srila Prabhupada, which is the banner of ISKCON. And therefore in his last testament and will, he said, I want all my disciples to remain in Krishna consciousness in this ISKCON movement. I want them to chant minimum 16 rounds and 25 rounds on Ekadashi. I want them to obey the GBC body because Srila Prabhupada established it. Even if the GBC body has some faults, and believe me, it does, it's what Srila Prabhupada established, and it's what has maintained this movement together. Every other movement of Srila Prabhupada's godbrothers has become splintered and scattered. But ISKCON continues to grow because of Srila Prabhupada's great intelligence and his sincere devotees like His Holiness Gopal Krishna Maharaj to keep that legacy intact. So anyway, I know there are many people that will be speaking, so these are a few words I wanted to offer all of you, and especially to thank all of you for helping me to take this momentous task of making this zone become ever more prosperous and growing. But to do that, we have to allow Krishna consciousness to grow in our hearts. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srila Gopal Krishna Maharaj ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Hare Krishna. Thank you is not enough for the words that His Holiness Guru Prasad Swami has given to us. I can see that time passes by and he's actually embodying the legacy also of our Guru Maharaj, that we all owe His Holiness Guru Prasad Swami as an exchange of our love, that he loves us, and we also should show our love to him by following his instructions. Because Maharaj's instructions are none different than our Guru Maharaj's instructions. So we should take it wholeheartedly. Not just say, Haribol Maharaj, thank you Maharaj, but not doing anything. So please,
as a token of our appreciation to His Holiness Guru Prasad Swami, that hopefully all of our God siblings will reciprocate to your love as much as possible. Thank you. We'd like to request one of our resident Srila Prabhupada's disciple here, Her Grace Mahadevi Mataji. Please come. She's been here for many, many years, and she's keeping us also together. She's like a Mother Superior here. Okay. Ocean of devotion is so wonderful. This is Gopal Krishna Maharaj, and I just think of him, I get tears in my eyes. Like Maharaj was saying this morning in class, that the Bhagavatam, the Shikshastika prayers are like the synthesis, he said, of the Bhagavatam, and then of the Shikshastika prayers, we have the Trinada Peace, Unichena, but the practice of that verse, that's where we actually experience the power of Guru's mercy, the Bhagavatam's mercy. And His Holiness Gopal Krishna Maharaj, you were personification of Vaishnava qualities. Although and we're so fortunate, we got to be in this great Vaishnavas association. And then we come together like this. And I was thinking, Maharaj, how we joined Prabhupada's mission because you were on a mission. You were on a mission. And then Gopal Krishna Maharaj, he's on a mission. And we get swept up with this goal of always sharing Krishna consciousness with others. But also being the personification of what we're saying. Maharaj was famous for his integrity. What he speaks, he would do. So we want to be like that too, right? We want to imbibe qualities like honesty, and humility doesn't just mean, it means going out on the battlefield of Krishna consciousness every day, and being chaste to Srila Prabhupada's books, and serving the Vaishnavas with love and devotion. Like His Holiness Gopal Krishna Maharaj, although he was so busy all over the world, I was always astounded when I would see him. Maharaj, you're still walking? He had just had like 2 heart operations, and so many things were breaking down in the body, and all of us here now in our 70s, we can relate to that. But there's something that Prabhupada has empowered us to keep going in the mission. And Maharaj was saying this morning in class, Guru Prasad Swami, there's no peace in ISKCON. If you're coming to ISKCON to have peace, you can forget about that. But it's a different kind of anxiety. You would see how Gopal Krishna Maharaj, he was always, it's a different kind of anxiety. You want to push on Prabhupada's mission. Okay, where can we distribute books today? How can I serve this Vaishnava nicely? How can I do another cultural program that makes Prabhupada's books come alive? We're always thinking, and that's how Maharaj, Gopal Krishna Maharaj, you're all over the world, just like Srila Prabhupada. And when I look out and see all of you, it's just overwhelming what Prabhupada has established. When Prabhupada left us, I was distributing books in O'Hara International Airport, and we were just devastated. It was like,
our heartbeat had left our body, and so we know how you feel. But we went home. We had kirtan all night. Many of us didn't get to go to Vrindavan. We were collecting money for Vrindavan, Mayapur, and different projects that Prabhupada had going on at that time. And but then Vaisheshika, our dear godbrother, who was very, very fond of Gopal Krishna Maharaj, they had a very special kind of friendship. To see them together just brought joy, because Vaisheshika says that Maharaj, he was always thinking, he was a businessman, just like Maharaj was saying in class today, and he knew how to not manipulate materially, but how to engage somebody in Prabhupada's mission. He's so expert at that. I want to be like that too. It's so wonderful when we engage others in Prabhupada's mission. So then we said to Vaisheshika, are you going to ring the cowbell? For the 5 minutes is up. So then Vaisheshika said, what do we do? Prabhupada's left, what do we do? And Vaisheshika said, well, we just go out again the next day. We just keep doing the process. We just keep doing what Prabhupada would want us to do. So that's the same for all of you. You just keep going. You keep chanting more attentively, serving with more heart. And as Maharaj was saying again, this is not a ritual. This is an experience. That's why we do it, right? It's an experience, and that's due to the mercy of Srila Prabhupada and great Vaishnavas like His Holiness Gopal Krishna Maharaj. He always took the time to Haribol, pranams, how are you? Even though he had a world empire going on, but that showed his humility, that he had time for everyone, and yet he was as powerful as a lion on the Prabhupada's battlefield. So this is a great Vaishnava, and I feel very, very fortunate that I got to have just a few moments of his association. And another thing too about repeating what Srila Prabhupada says in his books, Gopal Krishna Maharaj, to hear his classes, you knew that he was repeating what Prabhupada said because you had just read that the other day, or you heard Prabhupada say that. And that's so reassuring. This is not a light thing to repeat what your spiritual master has given you, to repeat what Srila Prabhupada has given, and no adulteration. There's no need to add, subtract, fabricate. Prabhupada said, I have given you everything. And Maharaj, you had so much faith in that. It was always just, my ear was just glued to the words coming out of your mouth, because I felt so close to Prabhupada when you would speak. So again, thank you for allowing me to be in your association, all of you. If there's anything I can do to be of some service in your mission, in your Guru's mission, then please allow me to be of some service. Hare Krishna, Jai Gopal Krishna Maharaj, Jai Krishna Balaram, Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mahadevi Mataji. Now, we'd like to request Panchagoda Prabhu. He's not here yet. I thought I saw him. Well, we'd like to welcome and request Dinabandhu Prabhu to please. Peter. Okay, we have some of our Prabhupada's disciples here also, just now come, visiting us from Shidam, Mayapur. We have Sarvadrik Prabhu. I just saw him. Please come. And then I will request Sridham Prabhu after Sarvadrik Prabhu. Our resident Prabhupada disciple also, Sridham Prabhu.
Sarbadrik Prabhu, he spends a lot of time also in ISKCON Delhi area. He just told me that he just returned, spending some time in Rohini, ISKCON Rohini, and then he was invited to come for that special occasion we had this morning. Actually, I was in Rohini for 3 weeks. We were doing 2-3 programs every day, and I was exhausted. So I said, I have to go back to Mayapur. But then His Holiness, Rukmini Krishna Maharaj, called up and says, you're not coming to my sannyas diksha? I'm sending you a ticket, come. So here I am. I feel very, very honored to be an honorary member of this wonderful family that was created by Srila Gopal Krishna Maharaj. You're all such wonderful devotees, full of love, full of dedication to the mission of Srila Prabhupada. If I have any love at all for Srila Prabhupada, how much love I have for each of you that surrendered your life to the mission of Srila Prabhupada. Your Guru Maharaj, Srila Gopal Krishna Maharaj, was Acharya. When we speak of Acharya, it's not a sectarian concern. Acharya means for any Vaishnava. And His Holiness Gopal Krishna Maharaj was Acharya in every sense. Srila Prabhupada would quote verse from Bhagavad-Gita, Vyavasayatmika buddhikaha kurunandana, that a devotee's consciousness is not many-branched, it's fixed. And he quotes Srila Vishwanath Chakravarti Thakur saying, what is the purport of this verse? That a disciple takes the mission of his spiritual master as his life and soul. Srila Prabhupada wanted books distributed, and Maharaj distributed millions of books from his Grihastha days. I was in our Juhu temple one day for a Sunday feast. I saw a very long table with maybe 20 different editions of Bhagavad-Gita in Tamil, Telugu, Bengali, Hindi, Sindhi. 20 different editions. Who has done this? His Holiness Gopal Krishna Maharaj. So Prabhupada said distributed books, and he made it his life and soul. He said, I want a temple in Delhi. And he made 20 temples in Delhi. He's doing exactly what Srila Prabhupada did. Srila Prabhupada wanted books distributed on the order of his spiritual master. So he took it up in his life and soul. He wanted to build temples for the glorification of the Lord and to bring people to Krishna consciousness. And he initiated devotees to help him. Your Guru Maharaj did exactly the same thing without deviation, not a millimeter deviation. He distributed books because it was Prabhupada's life and soul. He built temples all over the world, not just in Delhi. And he initiated 40,000 disciples following the example of Srila Prabhupada. He could have claimed that all for himself. I was at the temple. I was very, very fortunate to be at the temple opening in Ludhiana. Such an extraordinary temple. He inspired the devotees. He got the temple built. He could put his picture on Vyasasan and say, this is my temple. But what did he do? With tears in his eyes, he's putting Srila Prabhupada's murti on the Vyasasan and offering that temple at the lotus feet of Srila Prabhupada, who is the founder, Acharya of every ISKCON devotee. So what is Acharya? Someone who follows their Guru. So he is Acharya, and he's practicing, he's preaching. Still he's preaching. How is he preaching? Because he's entered the hearts of 40,000 disciples who want to do the same thing. So you're all young devotees, and we're all old men, as Mataji was saying, in our 70s, 80s. We just suffered irreplaceable loss of my godbrother Charu Prabhu, such a dynamic preacher. 80 years old, gone. So many godbrothers gone, godsisters gone. Who will take up the mission of Srila Prabhupada as you learned it from your Guru Maharaj? Are you ready? With enthusiasm! Haribol! Thank you very much. Following the mission of your spiritual master in his footsteps, and all of you will go back home, back to Godhead. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Thank you, Sarbadrik Prabhu. We'd like to request Sridham Prabhu. Yes. This is for the
speakers to be called upon because we'd like to squeeze as many devotees having their offerings of homages to our Guru Maharaj to make it as brief as you can. We're not going to put any time limit, but you know what to do. Hare Krishna. श्रील प्रभुपाद की, परम पूजनीय गोपाल कृष्ण महाराज की। पिछले 3 दिन से मैं मेरठ में था, तो मुझे जब बोला गया वहाँ पर कि आपने भागवत के ऊपर और भगवत गीता के ऊपर बोलना है, लेकिन जहाँ मैं पहुँचता था जिस सेंटर में, मुझे यही कहते थे वो लोग, वहाँ के जो ब्रह्मचारी और भक्त है, कि प्रभुपाद जी के बारे में बताइए और थोड़ा गोपाल कृष्ण महाराज के बारे में बताइए। तो 3 दिन से महाराज की ग्लोरिफिकेशन ही मैं 3 दिन से गा रहा था। वो वहाँ पर एक बात मुझे सुनने को मिली महाराज के बारे में। उन्होंने, एक ब्रह्मचारी ने कमेंट्स दिया कि श्रीधाम जी, इतना आप अपने को प्यार नहीं करते हैं जितना गोपाल कृष्ण महाराज आपको प्यार करते थे। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, सच्ची बात है ये, कि महाराज जी मुझे बहुत ही प्यार करते थे। 1975 में पहली दफ़ा, नहीं 74 में, 74-5 में दोनों में मिला मैं। 74 में पहली दफ़ा महाराज के दर्शन हुए थे, सौभाग्य मिला मुझे उनके दर्शन करने का। और मैंने उनमें पाया कि जब से मुझे वो मिले, मैंने ये देखा कि जिसको भी वो मिलते थे सबको भगवान की सेवा में लगाने की कोशिश करते थे, कोई ना कोई सेवा जरूर देते थे। और प्रभुपाद जी को जितना फॉलो करते थे, जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा भारतीयों में, भारतवर्ष के जितने भी डिवोटीज हैं, सबसे ज़्यादा मैं ही रहा हूँ उनके साथ शुरुआत में। पहले तो भारतीय कोई था ही नहीं, तो हम ही लोग थे, 2-3। तो 100%, 100% प्रभुपाद जी को फॉलो करते थे वो। प्रभुपाद जी के बिना एक भी बात नहीं कहते थे। प्रभुपाद जी चाहते थे कि किताबों का ट्रांसलेशन, भगवत गीता, भागवतम और जितनी भी प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, उनका ट्रांसलेशन हिंदी में किया जाए और वितरण किया जाए। महाराज जी ने सबसे पहले भगवत गीता का ट्रांसलेशन कराया। अरजीब, एक लड़का था अरजीब, उसके थ्रू उसने किया, हालांकि बड़ी मुश्किल हिंदी लिखी थी उसने। उसके बाद फिर दोबारा से ट्रांसलेशन किया गया, तो ये प्रयास किया गया। वो हिंदी समझ में नहीं आती थी, इंग्लिश समझ में आती, हिंदी समझ नहीं आती थी, वो ऐसा वो हिंदी में ट्रांसलेशन किया था। लेकिन प्रयास तो किया, महाराज ने प्रयास किया पहली दफ़ा, और कोई नहीं था। उसके बाद फिर सरल हिंदी में भी किया, और सिर्फ छपाई ही नहीं किताबों की है, वितरण भी किया। मायापुर, बम्बे, दिल्ली का कंपटीशन रहता था, तो महाराज अपने शिष्यों को खूब उत्साहित करते थे, खूब बुक्स बांटिए, खूब बुक्स बांटिए, खूब बुक्स बांटिए। और उसका नतीजा ये निकलता था कि कंपटीशन रहता था सब जगह, कम नहीं रहते थे, ज़्यादा ही होते थे। कभी कभी मायापुर आगे निकल जाते थे, कभी कभी दिल्ली आगे निकल जाते थे। अच्छा, प्रभुपाद जी ने एक दफ़ा, मैं भी था उस समय, ये कहा था कि दिल्ली में चारों तरफ, चारों कोनों में एक एक मंदिर बनना चाहिए, और एक बुद्धा गार्डन जैसे था वहाँ पर। ये एक्चुअली बुद्धा गार्डन की बात है। ये बुद्धा गार्डन में सवेरे सैर करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर प्रभुपाद जी ने ये कहा था। तो देखिए, महाराज जी ने प्रभुपाद जी की वाणी को बिल्कुल सिद्ध किया। सिर्फ 4 कोनों में नहीं,
दिल्ली के हर कोने में एक एक मंदिर बन गया, कम से कम 20 बन। और सिर्फ इतना ही नहीं, मंदिर भी बनाए, भक्त भी बनाए, हजारों की संख्या में भक्त बनाए, और बिल्कुल छोटे मोटे भक्त नहीं, बिल्कुल अपनी तरह ही भक्त और पैदा किए। जितने भी आप प्रभुपाद हमारा महाराज के शिष्य देखते हैं, एक से एक बढ़िया है। तो सारा ये प्रयास किसका है? गोपाल सिंह महाराज जी का। कभी कभी रात को जैसे प्रभुपाद जी सोते नहीं थी ना, महाराज भी बहुत कम सोते थे, मुझे एक्सपीरियंस है, बहुत कम। और जो भी ट्रैवलिंग करनी है वो रात को करते थे, दिन में नहीं करते, ताकि दिन में और मीटिंगें कर लें, लोगों से मिल लें। अच्छा, जैसे प्रभुपाद जी सिद्ध, हमारे राधा पार्था सारथी भी सिद्ध डीटीज हैं, प्रभुपाद जी भी सिद्ध डीटीज हैं, और गोपाल कृष्ण महाराज भी सिद्ध गुरु। कैसे आप बोलोगे कैसे? बाकियों का तो अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज के बारे में बताऊंगा मैं, कैसे सिद्ध हैं। सिद्ध करके दिखाया, मैंने देखा खुद। क्या हुआ, एक दफा शॉर्ट में बताता हूं, दिल्ली से मुझे लेकर के गए वैष्णो देवी, वहां को जगह मिलनी थी, हमें जगह मिली नहीं वहां पर हमें बाद में, लेकिन वहां से फिर मुझे ले गए चंडीगढ़। चंडीगढ़ ले गए तो वहां जाकर के बोलते हैं, नवजुंदर स्वामी भी उस समय हमारे साथ थे, तो मुझे बोलते हैं, श्रीधाम आपने यहां रहना है अभी। नवजुंदर स्वामी नैरोबी जा रहे हैं अफ्रीका में, और मैं तो चले जाऊंगा बम्बे में, दिल्ली होकर के। आपको रहना है यहाँ पर, शनिवार और इतवार को अपने लेक्चर देना है। मैंने कभी कीर्तन भी नहीं किया, कभी लेक्चर नहीं दिया, तो मुझे बोलता कि आप मंदिर को संभालना है। उन्हीं दिनों साक्षी गोपाल भी आए थे, तो पहला मेरा लेक्चर, मैं कभी कुटिया थी वहां पर, एक मंदिर नहीं बना था, और मंदिर छोटा सा था, पहली तरफ बना हुआ था, वो भी छोटे से कमरे में। मैं कुटिया में कभी जाऊं, कभी टेप रिकॉर्ड सुनूं, कभी किताब पढ़ूं, कभी क्या करूं, क्या बोलूंगा मैं, पता नहीं। पहुंच गए, छोटे से मंदिर था वहां पर, वहां पहुंच गया। साइड में प्रभुपाद जी की फोटो थी, और पीछे राधा कृष्ण थे। अभी और तो कुछ आता रहता, घर में तो कीर्तन करते ही थे हम लोग, तो जय राधा माधव कुंज बिहारी शुरू कर दिया बोलना, और बार बार प्रभुपाद जी की तरफ देख रहा हूं। सर्दियों के दिन थे, नवंबर दिसंबर के, और मुझे पसीना आ रहा है तो सामने देखता हूं, तो सामने पता कौन कौन बैठे थे? वहां के गवर्नर चन्ना रेड्डी जी, उनकी पत्नी मेरचंद महाजन, और डीआईजी पुलिस हरियाणा और चंडीगढ़ के, बड़े बड़े, और पूरा पंडाल भरा हुआ है, इससे आधा समझो, जितना भी है ना, इतने आधा पूरा भरा हुआ था उस इलाका। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नाम इन्हें करने के बाद, अभी श्लोक कौन सा बोलूं, जो याद किया था वो तो पता ही नहीं, जो सामने आ गया बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, पता नहीं क्या बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा मुझे बाद में बताया गया कि पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल आवाज नहीं थी, एक पिन भी डैंक को आवाज नहीं आती थी। ऐसा क्या बोला पता नहीं। तो ये करामात किसकी है? गोपाल कृष्ण महाराज जी की। हाँ, हरे कृष्णा, धन्यवाद, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की। Thank you, Sridham Prabhu. Would like to request Dinabandhu Prabhu, and after Dinabandhu Prabhu, I will read the message from His Holiness Jayapataka Swami. Our Dinabandhu Prabhu. Hare Krishna. We can move a little bit. Yes, move a little bit. So as long as make that still safe.
Om Ajnanatimirandasya Gananjana Shalakaya Chaksurum Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namah Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Sayam Rupakanamayam Jatati Swaparandiyam Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasudhi Gaur Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhaivacha patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. So हम एकत्रित ये श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का गौशाले में जो प्रस्तुत करते प्रभुपाद का प्रेम इनका भक्तों के प्रति, क्योंकि प्रभुपाद चिंतित था कि ये वृंदावन होते हुए भी शुद्ध गाय के दूध मिलना बहुत मुश्किल था, और प्रभुपाद ये सब भक्तों का चिंता करते थे इनका स्वास्थ्य के। ये प्रभुपाद का प्रेम था इनका भक्तों के लिए कि यह सब कुछ छोड़ करके यह आया। उस समय कुछ नहीं था, बॉटल पानी भी नहीं था, और प्रभुपाद ये गौशाला बनाया जिससे ये भक्तों का शुद्ध गाय के दूध मिल सकते थे। ये this is manifestation of Prabhupada's love for his disciples, this गौशाला। और हम एकत्रित यह है वृंदावन में जहाँ ठाकुर जी की दिव्य लीला होते रहते हैं, किसके लिए? श्री गोपाल कृष्ण महाराज के चिरुबा एनिवर्सरी का मनाने के लिए। श्री वृंदावन धाम की। और ये महाराज का लेक्चर सुन करके सुबह कितना फोर्स, कितना उत्साह, कितना डिटर्मिनेशन, दृढ़ता महाराज ने लेक्चर दिया, कितना उत्साह था। और किसके लिए? पुस्तक वितरण के लिए, और आप असली गुरु का मिलने के लिए। कितना उत्साह। और हम देखते हैं कि ये सेवा, प्रभुपाद का दिव्य सेवा, कितना सेवा किए, इतना इंस्पिरेशन किए, प्रेरणा दिए सब भक्तों को कि दिल्ली में दिल्ली के एरिया में, मेट्रोपॉलिटन एरिया में आई एम श्योर 20 के अधिक मंदिर है अभी। कितने मंदिर है? 24 मंदिर है। और छोटी छोटी मंदिर नहीं, विशाल, बहुत ही सुंदर। अभी हम गए थे कहाँ, रोहिणी, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और जितने भी मंदिर है कि महाराज बनाया वो सब बहुत विशाल मंदिर। और विश्व में कई देश है, बहुत से देश है जहाँ 20 मंदिर भी नहीं है, और ये एक सिटी में 24 मंदिर है। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की। I'm totally in awe. I don't know how you say that in Hindi, but I'm totally in awe. कितना शक्ति था, कितना प्रभुपाद के चरणों में समर्पित था कि 24 मंदिर एक ही शहर में, जहाँ विश्व में कई देश है कि जहाँ 20 मंदिर भी नहीं है। और हमेशा पुस्तक वितरण वो जानते थे। हम देखते कि वो केवल प्रभुपाद के जो सबसे प्रिय इच्छा था पुस्तक वितरण, महाराज इसमें धन मन धन सबसे इसका pushing, he was just pushing us, distribute books, exactly like Srila Prabhupada. और हम देखते कि ब्रो के हर साल ये जो महाराज के जोन है हमेशा नंबर 1 होते थे पुस्तक वितरण में, इनके प्रेरणा से। और इतना विशाल सेवा करके महाराज मुझसे बहुत से प्रेम करते थे।
हमेशा जब वृंदावन में आते थे कभी कभी मुझे एक चादर भी देते थे कभी कभी। और जब हम दिल्ली गए मैं एम्स कुछ इलाज कर रहा था दिल्ली मंदिर में रहा, रोज अपने कमरे से वो मेरे कमरे में आते थे, इतना इतना प्रेम था। ये पूरा विशाल सेवा कर रहे लेकिन फिर भी कुछ समय मिले हम तो इनके सामने एक मच्छर है, लेकिन ये मच्छर के लिए वो भी आते थे देखने के लिए। That is his humility and his love. So आप बहुत भाग्यशाली है। जैसा मेरा प्रिय बंधु प्रिय गुरु भाई सार्वजनिक बताया कि रोज खबर मिलते है कि ये गॉड ब्रदर ये गुरु भाई चले गए, ये गुरु बहन चले गए, ये गुरु भाई चले, सब लोग जा रहे हैं। सो आप लोगों का ये सब कर्तव्य आपके ऊपर आ रहा है। कोई हम सब जाने वाले, हम सब वेटिंग रूम में बैठे हैं केवल रिजर्वेशन का प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आप लोग महाराज के प्रेरणा लेके ये प्रभुपाद के आंदोलन को और 24 मंदिर बनाने हैं दिल्ली के एरिया में। और प्रेम महाराज प्रस्तुत किया सब भक्तों के प्रति, ये प्रेम भी आपको सब भक्तों के ऊपर देना है। और फिर ये कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट will go on and on and on and on. Shri the Gopal Krishna Goswami Maharaj ki Hare Krishna. Hare Hare. Thank you, Dina. टूटी फूटी हिंदी से माफ कीजिए। Dhanyavad. This is from His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. Dear His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Today, on your second disappearance day, I am here in Chennai and I am thinking of you. We miss you very much. Your presence, your guidance, and the way you cared for this movement. You gave your whole life to Srila Prabhupada's mission. You were a GBC, a bureau member, and in various other leadership positions. You worked hard to develop ISKCON across India, helping start and grow temples, including Delhi, and supporting so many projects with great dedication. You took on so much responsibility, organizing ISKCON's structure, guiding leaders, and making sure things were done with care. You also kept encouraging devotees to distribute Srila Prabhupada's books because you knew how important that was. Through all of this, you remained simple and humble. You never made it about yourself, you just served. We feel your absence now, but your example stays with us. If we want to honor you, we must keep serving sincerely, cooperate, distribute books, and keep Srila Prabhupada's movement strong. On this day, I urge all your disciples and well-wishers to keep you alive in their hearts by continuing your mood of service, cooperating, expanding book distribution, and serving Srila Prabhupada's mission sincerely. This will be the true offering to you. Your servant, Jayapataka Swami. Now, the next one also, one of our resident Srila Prabhupada's disciple, Her Grace Daivi Shakti Mataji. So she's not able to come.
physically, but she is in Vrindavan. Dear respected devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada and Srila Gopal Krishna Goswami. There is a proverb in Bengali that all valuable nuts like almonds, macadamias, walnuts, coconuts, etc., all take a long time to fructify. Anything valuable takes a little time to come into existence. Therefore, there is no harm in waiting for the best thing. But everything is well that ends well. That should be the principle. Srila Prabhupada wrote this about devotional service, and this is perfectly applicable to the life of Gopal Krishna Goswami. One old life member from Delhi, an honorary magistrate, used to visit Vrindavan with his entourage. His wife once told me that young Gopal Krishna and her son were schoolmates in Delhi, and he would play at their home. Now, just see how he has become such a great Vaishnava and Guru. Srila Prabhupada heaped tons of responsible service upon him because he was such a valuable disciple. Like a magnanimous tree that gives valuable fruits and nuts, he created so many valuable disciples, such as yourselves. And these devotees are like seeds or nuts, who can also become valuable trees that create more fruits. A nut is a seed. When planted, it can flourish and produce. Now we are seeing that amongst Maharaj's disciples, he created several disciple gurus who are creating valuable disciples of their own to carry on the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada recognized Maharaj's service potential, and he showered him with service. As fruits and seeds from his tree of devotion, we pray that you become powerful and worthy disciples just as he was. He planted the seeds of devotion in you. Now grow, fructify, create more devotees, and carry on Lord Chaitanya's compassionate Sankirtan movement worldwide. We pray for your advancement in the footsteps of your Guru Maharaj. You are all most glorious recipients of his mercy. Now, please flourish in Krishna consciousness so that all the service he did will increase. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Gopal Krishna Goswami Maharaj. Hare Krishna. That's from Mother Daivi Shakti. Since I'm already in a role here, I'm going to mention from the late His Holiness Tamal Krishna Goswami also, his dear God brother, and he speaks about our Guru Maharaj. My dear God brother, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, an extremely empowered preacher who has established a magnificent temple in New Delhi, continues to look after Prabhupada's temples in Mumbai and Vrindavan. Gopal Krishna Maharaj is a very strict follower of Prabhupada, and he tirelessly works despite all of his sometimes health problems. But it never stops him from preaching and practicing Krishna consciousness. Guru Maharaj Ke. So we'd like to ask and request Archita Prabhu. You come first. I already mentioned your name. No. You don't want to speak? Come. And some devotees are also
They traveled very far away just to be with us and get the blessings and mercy from Guru Maharaj, Srila Prabhupada, and Krishna Balaram Mandir. So I will be asking them first before it's too late for them to go and catch the train or the plane. Yes. Archita Prabhu, now he's stationed in New York, where we will be celebrating the 60th anniversary of the founding, the incorporation of ISKCON in August 1st, 2nd, and 3rd. So everyone is welcome to come. You just have to buy your own tickets. Slight correction. The main festival is July 31st. Yes. I know, because LA Rath Yatra is the 2nd of August. The very next day, very next day I have to catch a flight to LA so I can go to LA Rath Yatra. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti-Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pucharine Nirvishesha Shunyavadi Paschasesha Tarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Svasadi Gaur Bhakta-Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyo patitanang pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So I'm going to speak in English. Will there be translation or? Okay. I was just wondering why Dinabandhu was speaking in Hindi when he speaks English. So. Hare Krishna. So I first met Gopal Krishna Maharaj before he became a sannyasi. When I joined in New York in 1973, he was still a householder. And in those days, Prabhupada's movement was mostly monastic, mostly like you see here, mostly bright saffron-colored men sleeping like sardines in one big room in New York. And then the mentality was, if you became a grihastha, it was like a curse. You know, something wrong, what's wrong with him? Why did he? But even then, with that mentality, we all had great respect for Gopal Krishna Maharaj. Because, as Rupa Goswami says, you need 3 things to advance in Krishna consciousness. Utsaha, Nischaya, Dharya. You need to be enthusiastic, you need to be determined, and you need to be patient. And he exemplified all 3. His enthusiasm was not the kind of bouncing off the wall enthusiasm. Not like that. Sometimes you have people like that. They jump 6 feet high one day and the next day they can't even get off the floor. No. He was very enthusiastic in any service that he did, very determined, and also very patient. I will share a few anecdotes, but the last one, patience, is extremely important because just in any religious tradition, people try to use God as their order supplier. Prabhupada said that all the time. Specifically, to correct others, even up to the point of killing them. He's our God, the God of our tribe, the God of our people. We should use him to kill all our enemies. So sometimes we still have that mentality when we come to ISKCON. We want to use Krishna, we want to use Lord Chaitanya, we want to use Lord Nityananda and Lord Nisringadev to accomplish our mission of correcting others and even killing them if necessary. So sometimes after you became a leader in ISKCON, some of his godbrothers and some of his disciples even would approach him with that mentality. Maharaj, don't you see what this person is doing or what that person is not doing? Why don't you do something about it? But he had the vision of being patient. Prabhupada also set that same example, that once somebody comes to Krishna consciousness, you have to be patient. You have to be patient. Sometimes other groups, they criticize ISKCON, oh, ISKCON is full of so many problems. And my response is, yes, that's because we're preaching. You don't have any problems because you're not preaching. As long as you're preaching, you're going to have a mixture of new, medium, older devotees, and there's going to be problems. So to get around that, you have to be patient. So Maharaj set that example. All right, so one thing I really noted about him was that no matter where he went, and we crossed paths a lot in different temples, no matter how late he came, the next day he was at the Pujari room door, not just to attend Mangalarti, to ask, can I perform Mangalarti? Without fail. Wherever we met, he would always be at the Pujari, and sometimes I would have to give up my spot so he could do it. That's why I remember so well. I'm all set to do Mangalarti, and then Maharaj shows up and says, can I do Mangalarti? Of course. Of course. Then, he was so expert at
pushing his disciples and followers to accomplish big things. I remember when I was in the Potomac Temple, that area was originally farmland and it became residential, a lot of very expensive mansions, many of which were owned by Indians, Indian diaspora. So I went with him to a home program once where he said, I know all of you. You came to America, husband, wife, and 2 children. You were living in a 1-bedroom apartment. Then you got a 2-bedroom apartment. Then you bought a 3-bedroom house. Now you're living in a $1 million mansion. Don't you think you should upgrade Krishna also? So by pushing like that, very gently but very firmly, now there's a very nice temple in that area, Potomac. They say the Washington, D.C. temple, but it's actually about 40 minutes away from Washington, D.C. So like that, he was very expert. Now, I always admired, again, his determination and his patience. And so I decided that I have to visit all these temples in the Delhi area that he created. So last year, I asked, tell me which are the most prominent. Somebody said, first you go to Dwarka, Delhi, because it's closest to the airport. So I went, and His Grace Amogli said, have you been to Rukmini temples? I said, no. He said, you must go. So I went there, and my mind was blown. Such a project. And we know who was the main driving force behind that? His Holiness Gopal Krishna Maharaj Ki Jai. And they have a very nice memorial room for him there. I was very happy that you suggested that I go there. And Maharaj, again, for forever and ever, I will pray that he put in a good word for me. I know where he is. He's in Goloka with Prabhupada and Krishna. So I pray to him. You may want to also meditate like that. Please put in a good word so that this fallen soul can also make it back to home, back to Godhead. Hare Krishna. Thank you. Haribol. Gracias. We'd like to ask our Panchagoda Prabhu to please speak few words. And after that, I'm going to ask Radhe Shyam Prabhu. He has to catch his train, that's why. Okay? And then Braja Bilas Prabhu also, he needs to catch a plane in Delhi. Unlimited words. I gotta sit down? Okay. If you like, please. No. His Holiness Gopal Krishna Maharaj Ki Jai. So, very inspiring to see so many enthusiastic devotees to come to celebrate such a great personality. His accomplishments, this Krishna Shakti Vinana He, without the empowerment of Krishna and Balaram. Yes, whenever Gopal Krishna Maharaj would come, especially to Vrindavan, he always was very concerned that all the devotees are being taken care of nicely. He understood physiognomy. He could see someone's face and understand the condition of their mind. And he also knew how to bring out the best in the devotee's devotion. Because if not, how can we accomplish 20 plus 22 temples? I don't know. Amazing the amount of guidance and inspiration that Gopal Krishna Maharaj gave. Also very concerned with the youth, the Gurukul, Bhaktivedanta International Gurukul. He always would call whenever there was any kind of concerns. He was always very protective to see that we establish a good educational system for the future of our society. We know that management is not easy. So Maharaj, he took the responsibility on the bureau and GBC responsibilities and so many disciples, but he was always conscientious to give good care to his godbrothers, everyone, not discriminating. I could see actually a genuine love and compassion, which are symptoms of a Vaishnava. So Gopal Krishna Maharaj, first time convinced me that I should stay in 1993 with Kadamba Maharaj to be part of this Krishna Balaram Mandir. His Holiness Gopal Krishna Maharaj Ki.
So he had his way of engaging everyone in Krishna's service. Hari, Hari. Uh-oh, somebody cut me off. Okay. He's very considerate and wants to see how to best way to utilize whatever talent anyone has in the serving of Krishna. That's expertise in management, that you can actually work in such a way to give people freedom to express their own creativity and individuality, but also empower them that they feel inspired to work tirelessly for developing and pushing on Krishna consciousness. And then the second time, after some time here, and was it 2009, 16, 17 years ago, Maharaj again asked that I come and be more involved. So my family and I are very thankful to Maharaj for his encouragement and also setting the example of a first-class disciple. He understood the mind to some extent of Srila Prabhupada and was very focused on book distribution, very focused on spreading Krishna consciousness all over the world. And this is Jagat Guru, someone who's repeating the words of Krishna, someone's repeating the words of his spiritual master. His Holiness Gopal Krishna Maharaj ki. So again, I won't take much time. We're just all very much appreciative. You've seen the different progress going on here in Vrindavan and also throughout Delhi and everywhere, all over the world. I see Chaitanya Mahaprabhu's mission coming up. There's struggles. There'll always be the fight between the demigods and the demons, but that struggle will give us strength so that we can actually become more active in spreading Krishna consciousness. We'd like to encourage everyone to participate, to assist in any way that you can to push on the book distribution, the Harinam Sankirtan, and taking care of the temple neat and clean, and people will be very much inspired to come back to Krishna, back home, back to Godhead. Thank you very much. His Holiness Gopal Krishna Maharaj ki jai. Hare Krishna. Thank you. Short and sweet. Hare Krishna. I'd like to request Radhe Shyam Prabhu. And after this, with your permission, I would like to read my offering to Guru Maharaj because it has a connection to the next speaker after I read my offering. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, हिंदी में बोलो इंग्लिश? हिंदी ठीक है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जब मैं पूना में 1995 में आया, तब से महाराज मेरे रिपोर्टिंग अथॉरिटी हैं, इसलिए निकट होकर महाराज जी को देखने के लिए मुझे मौका मिली, जिसको मैं परम सौभाग्य मानता हूँ। महाराज से सीखने लायक कोटि कोटि शिक्षाएं हैं, उनमें से 2-4 चीज़ आज मैं बताऊंगा आपको। तो महाराज जी के साथ मैं पूना में जाता था बड़े लोगों को मिलने के लिए। एक मिस्टर जॉली करके एक व्यक्ति था, तो महाराज जी उनके घर में गए थे, मैं भी गया था साथ में। महाराज ने पूछा, मिस्टर जॉली, आपके बिज़नेस कैसे चल रहा है? वो बोला, महाराज जी इतना बढ़िया चल रहा है, मेरे बेटी के लिए मैं अलग एक बिज़नेस चालू करके दे दिया मैंने, मेरा भी चल रहा है, उसका भी चल रहा है। तो महाराज ने बोला, जॉली, यू आर जॉली बिकॉज ऑफ कृष्णास मर्सी। इसलिए आप कृष्ण को बोलना नहीं चाहिए। जब आप अपने आनंद में डूबे हुए हो तब कृष्ण को भी मत बोलो, कृष्ण को भी देना चाहिए। सही कि नहीं? वो तुरंत बोलते, हाँ महाराज सही, आपने सही बोला। आपने इस तरह महाराज जी बड़े लोगों को अपने हृदय से, उनके हृदय स्पर्शी तरीके से महाराज जी बातचीत करते थे। ही वाज स्पीकिंग लाइक अ फ्रेंड even with very big people. Big people never thought they are big in front of him. They thought of him like a genuine friend in life. Maharaj gave that type of feeling. और एक चीज़ मैंने देखा है,
महाराज जी जब रात को प्रोग्राम 9:30 बजे होता था पूरा, अपने कमरे में आते थे, सब उनके शिष्य आ जाते थे, पति पत्नी बच्चे सब लोग अपने परिवार को महाराज के पास प्रदर्शित करना। महाराज जी पूछते थे ठीक हो क्या, ऐसे पूछते थे ऐसे, बस वो ये वो लोग चाहिए उनको। हाँ? तो अनेक लोग उनको कंट्रोल करते थे, महाराज बोलते कंट्रोल मत करना, सबको छोड़ो अंदर, सब आते थे। और मैं खड़े रहता था दरवाजे में, महाराज जी 11 बजे तक मैं खड़ा रहता था। महाराज बोलते राधे श्याम यू आर टायर्ड, गो एंड टेक रेस्ट बोलते थे। तो बाद में महाराज बोले 12 बजे, बोले देखो 12 बज गया, अभी मैं कल सुबह नहीं आऊँगा मंगल आरती में। मैंने बोला महाराज आराम कीजिए अच्छी तरह। लेकिन मंगल आरती में जब हम जाते थे आल्टर में देखते थे महाराज जी को। तो ऐसे हमारे साथ जो करते थे महाराज। एक बार गुरु पूजा 8 बजे हो गया, तो महाराज ने पूछा राधे श्याम आपके मंदिर में कितने बजे गुरु पूजा पूरा करना होता है? मैंने बोला महाराज 8 बजे पूरा होता है। मैंने बोला तो महाराज बोले अभी 8 बजे मुझे पूरा करना है ना, बोला उन्होंने। मैंने बोला महाराज आपकी मर्जी। तो महाराज ने चलाया 8:45 बजे तक। उसके बाद यशोमती ने चालू कर दिया उन्होंने। तो एक बात मैंने देखा, जितना महाराज जी भारत के प्रधानमंत्री को भगवद-गीता, बड़ा भगवद-गीता दिया, प्रभुपाद जी के कॉइन खोला उन्होंने, जैसे उसके पूर्व जो प्रधानमंत्री थे वाजपेयी को दिल्ली में लाया महाराज जी ने, ऐसे बड़े कार्य भी करते हैं महाराज जी। तो ऐसे उन्होंने बताया 20 से भी ज़्यादा मंदिर खोला है। As much as Maharaj has made lot of external accomplishments, if one observes Maharaj closely, you will see his internal absorption. तो मैंने देखा है महाराज जी को शिव विग्रह के ऊपर बहुत श्रद्धा है। उनके कमरे में भी बैठकर 1.5 घंटा रोज पूजा करते हैं महाराज जी। कथाओं में भी आपने सुना होगा, साक्षी गोपाल और माधवेंद्रपुरी के जो किरशोर गोपीनाथ, इन चीज़ों के ऊपर महाराज ज़्यादा बताते हैं। Maharaj had deep faith in the deity form of the Lord and great joy in doing Sankirtan, Kirtan and taking part in it, as much as he was successful in external accomplishments also. और मैंने जब भी महाराज जी को उनके शिष्यों के बारे में मैंने बताया, His Grace मोहन रूप प्रभु, His Grace सुंदर गोपाल प्रभु, His Grace अमोगला प्रभु, और His Grace रुक्मिणी कृष्णा प्रभु, और इस तरह हमारे विवेक बिंद्रा जी हैं, इन लोगों के बारे में मैंने बताया। महाराज जी के मुख में इतने उनके लिए अप्रिसिएशन थी। महाराज जी बोला करते थे कि दे ऑल आर ग्लोरियस इन देमसेल्व्स, व्हाट एम आई डूइंग, ऐसे बोलते थे। बहुत नम्र थे ऐसे महाराज जी। तो महाराज जी हर एक के शिष्य के बारे में निकट जानते हैं। मैंने देखा कि हर एक के साथ महाराज का संबंध है। Only super soul in our heart can keep connection with everybody. But how Maharaj keeps connection with so many always amazed me. It was from small to big. तो इस तरह अनेक शिष्यों के साथ पूना में भी संबंध है। एक लास्ट चीज़ एक बोलना चाहता हूँ, वन लास्ट थिंग, कंक्लूडिंग ना। देखिए एक वक्त है पूना में, वो महाराज जी को जब एयरपोर्ट से मंदिर आते समय हाईजैक करके किसी के घर में लेके जाते थे, और वापस रिटर्न जाते थे मैं हाईर हाईजैक करके दूसरे दिशा में लेके जाते थे। अब हमारे सब कमेटी के लोग नाराज़ होते थे। तो एक और कमेटी के लोग प्लान बनाते थे स्केड्यूल, और दूसरी ओर ये लोग थोड़ा स्केड्यूल को ब्रेक करके कुछ करते थे। लेकिन मैंने देखा महाराज कभी भी उनसे नाराज़ नहीं होते थे, क्योंकि मुझे बोलते थे देखो उसने अच्छे घर में लेकर गया हमको, गलत क्या है, उनको समझ आते थे ऐसे। इसी तरह एक पार्टी ने महाराज को शिकायत किया, मुझे भी लेके गया साथ में। एक भक्ति के ऊपर वो नाराज़ थे कि वो नाराज़ होता करके, महाराज उनको थोड़ा शांत करके भेज दिया। और लास्ट में उनको बोला कि नाराज़ होता है लेकिन सेवा भी करता है, करेक्ट है, ऐसे बोलते थे वो। और बाद में उस भक्त को बुलाया, उसको डांटा महाराज, जोर से डांटा उनको, कोई और नहीं थे, अकेला था वो, मैं भी था महाराज के साथ। मैंने देखा महाराज जी ने उसकी ओर प्रेम को प्रकट किया और डांटा भी उनको, और दूसरों को समझाया। I learned lot of things like this from Maharaj, watching him personally. Whatever I am made up of is Maharaj's mercy. He was my authority, and he treated like his own son, very lovingly. And as I said, he is very expert in reaching the heart of people. So he still resides in my heart. And after Maharaj left, we all are feeling very much missing him. We are remembering his teachings and his pastimes, and it is like a big support withdrawn from our lives. Nevertheless, we will remember him and his lotus feet at every moment. Thank you. Hare Krishna.
गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की Hare Krishna. So, first of all, I'd like to offer our Guru Maharaj my 2 books that we just published last, and also last Gaur Purnima. It was sold out, both the volumes, and this is the second reprints. Message for the Soul and Mission of Compassion. My most humble obeisance is at the lotus feet of my beloved Guru Maharaj, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. I offer my respectful obeisances to all senior Vaishnavas, my dear God brothers, God sisters, disciples, and all assembled devotees. Today, on this sacred occasion of the second disappearance anniversary of our beloved Guru Maharaj, I stand before you with a heart filled with gratitude, separation, remembrance, and deep responsibility. By His causeless mercy, I had the rare and life-shaping fortune to serve Him directly for many years, to travel with Him in North America, Russia, and India, to observe Him closely in preaching, in leadership, in personal dealings, in moments of intensity, in moments of compassion, and in His unwavering dedication to Srila Prabhupada's mission. And for the last 24 years in Vrindavan, I have tried in my own small way to continue serving in the Holy Dham, carrying forward whatever little service He mercifully entrusted to me. When I remember Guru Maharaj, so many qualities arise in my heart. But today, if I were to speak of the 3 qualities that affected me most deeply, the 3 qualities that continue to guide my life even now, they would be this. First, His unflinching loyalty to Srila Prabhupada and His mission. Second, His deep personal care and responsibility for devotees. Third, His tirelessly determination in service until the very end. These were not merely admirable qualities in Him. These were living instructions. The first quality that affected me most deeply was Guru Maharaj's absolute loyalty to Srila Prabhupada. He did not live for himself. He lived for the desire of his spiritual master. His heart was fixed on one central principle. How can Srila Prabhupada's mission go forward? This was the foundation of his life. Wherever he traveled, whether in India, North America, Russia, or elsewhere, his inner purpose remained the same. He was not moved by comfort, convenience, recognition, or personal ambition. He was moved by service. And one of the most striking and historic manifestations of this loyalty was his dedication to the temple of Vedic Planetarium in Shidam, Mayapur. Guru Maharaj saw TOVP not as a building project alone. He saw it as Srila Prabhupada's dream, as a monumental offering to Lord Chaitanya Mahaprabhu, and as a spiritual gift for the whole world. He understood that TOVP was meant to stand as a proclamation of Gaudiya Vaishnava Siddhanta, a beacon of Sankirtan, and a symbol of the future glory
of Sri Chaitanya Mahaprabhu's movement. He gave his energy, his thought, his concern, his encouragement, and his heart to seeing that this divine project would be completed. That left a profound impression on me, because through that dedication, he taught us something very important. A true disciple does not simply admire the dream of his guru. He helps build it. He sacrifices for it. He takes responsibility for it. He stays with it until it is done. Guru Maharaj's life taught me that faithfulness means to stand by the mission of the Guru, not only in inspiration, but in execution. Today, when I think of how to honor him, I feel that one of the ways is this: to remain loyal to what he gave his life for, Srila Prabhupada's mission, the Vaishnavas, the holy dhams, and especially the great preaching vision represented by projects like TOVP in Mayapur. His deep personal care. From a distance, many may have seen him as a great leader, a world traveler, a preacher, a GBC, a spiritual master, and an organizer of massive service. But those who served him closely also saw another side. He carried people in his heart. He was concerned for devotees. He wanted them protected. He wanted them engaged. He wanted them guided. He wanted them to grow. His compassion was practical. It was not vague. It was not merely emotional. It had form. It had responsibility. Sometimes he encouraged. Sometimes he corrected. Sometimes he pushed. Sometimes he consoled. But always with the desire to help devotees become stronger servants of Srila Prabhupada. I saw this personally while traveling with him. Despite immense responsibilities, he did not become impersonal. He remained attentive. He could see the needs of individuals, temples, communities, and projects. He wanted devotees not merely to feel included, but to become spiritually substantial. That deeply influenced me, because it taught me that spiritual leadership is not simply administration, and it is not simply inspiration. It is care rooted in responsibility. As one who has also received service to guide others, I feel this lesson very strongly. If I want to honor Guru Maharaj, then I must not only continue external service, I must continue his mood of helping people become serious, sincere, cooperative, and fixed in devotional service. The third quality that affected me most deeply was Guru Maharaj's tireless determination. He did not stop serving. He did not slow his dedication. He did not allow bodily limitations to weaken his spiritual purpose. Even when the body became strained, his service mood remained intense. His commitment did not retire. His desire to please Srila Prabhupada did not diminish. This quality entered my heart very strongly. Many people serve when conditions are favorable, but great souls serve even when the body protests, when circumstances are difficult, when burdens are heavy, and when obstacles are many. Guru Maharaj's life was a life of sacred perseverance. And now that he is no longer physically present before us, this quality has become even more meaningful to me. Because the real question now is not simply, how glorious was Guru Maharaj? The real question is, will we continue what he lived for? Will we continue when we feel separation? Will we continue when we feel alone? Will we continue when service becomes demanding?
Will we continue when the inspiration must be drawn not from physical proximity, but from remembrance and obedience? Guru Maharaj's example answers us very powerfully. Yes, continue. Continue until the end. What can I do now to make my service worthy? This question lives very deeply in my heart. What can I do to make service worthy now after Guru Maharaj's physical departure? I feel the answer is this. I must become more serious, not less. More faithful, not merely emotional. More cooperative, not isolated. More accountable, not casual. More absorbed in his instructions, not merely attached to his memory. If I want truly to make my service worthy, then I must live in such a way that Guru Maharaj's absence makes me deeper, not weaker. To honor him now means to remain loyal to Srila Prabhupada's mission, to support the completion and flourishing of the great projects he cherished, like especially TOBP. TOBP ki! Guru Maharaj, Brajabilas Prabhu told me that he was the #1 supporter of TOBP right in the end. So we should help fulfill, because Prabhupada commissioned, Srila Prabhupada commissioned our Guru Maharaj also to help build that temple. To serve Vrindavan with humility and steadiness, to help devotees become spiritually strong, to protect unity among God brothers, and to continue serving until the final breath. The greatest danger after the departure of a great soul is that we preserve the memory but weaken the mission. We speak of him but do not represent him. We glorify him but do not continue his service mood. That must not happen. I can only inspire others meaningfully if I myself try to live with Guru Maharaj has taught me. This is for my dear God brothers and my dear disciples. Not by claiming closeness, but by showing fidelity. Not by speaking sentiment alone, but by remaining steady in service. Not by honoring him only with words, but by living in a way that reflects his example. To my dear God brothers, I would humbly say, let us remain united in service to Guru Maharaj's instruction. Let us not become weakened by small differences. Let us remember his broad heart with his practical dedication, his loyalty to Srila Prabhupada, and his commitment to the future of ISKCON. Let us help fulfill what he gave us, his life, including the continued strength of the preaching mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. And to my dear disciples, I would say, if you wish to please me, then please me to continue the legacy of my Guru Maharaj. Become serious chanters. Become dependable servants. Love Srila Prabhupada's movement. Serve cooperatively. Avoid superficiality. Carry responsibility. And learn to persevere. My final prayer. Guru Maharaj, please continue to guide us. Please help us remain faithful to Srila Prabhupada. Please help us remain united in service. Please help us remain humble, responsible, and spiritually serious. Please help us carry forward your mood of dedication. Please help us serve Vrindavan, serve Mayapur, serve the Vaishnavas, and serve the mission for which you gave your life. Please bless us that we may continue in your footsteps until the very end of our lives. You are no longer physically visible before us, but your instructions, your sacrifice, your example, and your mercy remain powerfully present. And if I can offer meaningful in your remembrance,
it will be this one. May I remain a servant of your desire. May I remain faithful to Srila Prabhupada's mission. May I help continue the service you love with steadiness, with humility, with cooperation, and with lifelong dedication. Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj ke! Srila Prabhupada ke! Shri Vrindavan Dham ke! Shri Mayapur Dham ke! Ritai Go Shitana Premanande! Hare Krishna. I would like to request my dear friend here, Brajabilas Prabhu. Hare Krishna. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाष्टततेशतारिणे जानुलंबितौ भुजौ कनकावदातो संकीर्तनक पितरो कमलाय दाक्षो विश्वंबरो दुजबरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो करुणावतारो करुणावतारो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद के, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj ke. First of all, thank you so very much, His Holiness Janardhan Swami Maharaj. He had spoken what I have to speak. But in any case, today is a very, very, very auspicious day. We all have gathered here to show our gratitude, kritagyata, for what Maharaj has done for us. Show gratitude. The biggest gratitude today which we can show His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, who has given his life for the mission of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, is that we all can come together and open the Temple of Vedic Planetarium on the 27th, 2027, on the 50th disappearance of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. All the speakers were talking about Maharaj has opened so many temples, 20 temples. Actually, it is 250 temples plus. It's not 20 temples because he was the chairman of the bureau. He was the trustee of all the temples in India. It is more than 250 temples. It's not just 20 temples. And the biggest temple is the Temple of Vedic Planetarium, which also he was the chairman. You can clap a little bit louder. And in book distribution, we were talking about book distribution. He only not distributed books. He was number one. Delhi was number one in book distribution. In fact, we were asking His Holiness Jayapataka Swami Maharaj how we can come number one, Mayapur. He said, go and get blessings of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. Otherwise, you cannot come number one. So we approached Maharaj. He gave his blessings. And the next year, we came number one in book distribution. So on this auspicious day, I also had come to take the blessings of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj so that we can open the temple on behalf of Ambarish Prabhu, Swaha Mataji and rest of the TOP team. We had come here to Maharaj to pray on his lotus feet
that Maharaj, please bless us as you have blessed for us to come number one in book distribution today on your second disappearance day. Please bless us so that we can do this little service for Srila Prabhupada on the 50th disappearance anniversary of Srila Prabhupada, which is 2027. Maharaj, please bless us so that we can open this temple. Without your blessing, it is not possible. And also, I would like to inform Maharaj, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. Maharaj, I am very, very grateful for giving all of your disciples who are helping the temple of Vedic Planetarium in a very, very, very big way. Maharaj, I am very, very grateful to you. So with this, I am grateful to each and every one of you for giving this opportunity, especially to His Holiness Janardhan Swami Maharaj, taking care of us whenever we come and having Mayapur in his heart. Very, very grateful to you, Maharaj, and all of you. Thank you also very, very much. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj K. His Divine Grace A.C. Bhakti-Vedanta Swami Srila Prabhupada K. Hare Krishna. Dhanyavad. Thank you. Thank you, Raj. We'd like to ask one of Srila Prabhupada's disciples. He also based here in Vrindavan. Dadi Bhaksha Prabhu. Hare Krishna. And after him, we'd like to request Pritu Prabhu, if he can hear me. Yes? You're next after. Dadi Bhaksha Prabhu, please. Oh, we're talking about prasadam. Everyone wants to know where to take prasadam, right? We're fasting still, by the way. For Prabhupada's disciples and sannyasis, the prasadam is on the first floor of the guest house, Govinda's first floor. Now we have senior devotees like temple presidents and so on. We have a special arrangement for you. I think it's behind this, in the corner. Big, big place for you. And the general devotees, God brothers, God sisters, everyone, 3 o'clock. 1:30 for Prabhupada's disciples and sannyasis. Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Pishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatadeshatarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हिल होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो हिंदी में बोलूँगा मैं, हाँ हिंदी चलेगा ना? ओके, हाँ थैंक यू बड़ो, बिकॉज बहुत सारे हिंदी भक्त लोग हैं यहाँ पर, इसीलिए। तो आज का बहुत शुभ दिन है, द्वादशी, और एक्चुअली गोपाल कृष्ण महाराज का जन्म हुआ था एकादशी का दिन। आज का दिन वो गोलोक धाम गए, द्वादशी का दिन, तो ये बहुत शुभ माना गया है। बैसाख का महीना है और वृंदावन धाम। तो एक्चुअली गोपाल कृष्ण महाराज को मैं जो है, जब मैं ज्वाइन हुआ 1975 में ही वृंदावन में, ये मंदिर जब कंस्ट्रक्शन उद्घाटन होने से पहले, तो तब से मैं महाराज को जानता हूँ, गोपाल कृष्ण महाराज को। तब से वो मेरे को जो है उनके अंडर में उन्होंने रखा है सेवा करने के लिए। ही वॉज माई जीबीसी, मेरे जीबीसी थे वो, कहीं दूसरा मंदिर को नहीं जाना दे रहे थे।
नहीं आपको कहीं नहीं जाना है, इधर ही सेवा करना है। पूरा लाइफ टाइम जो है उन्होंने मेरा बहुत टेक केयर किया है गोपाल कृष्ण महाराज ने। कभी भी मेरे को जो है दधि भक्ष कम हियर, इधर आइए नहीं बोलते थे। दधि भक्ष महाराज कैसे है, ठीक है ना, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, वो तो बताइए। तो मेरे को रूम में बुलाते थे बम्बई में, उसमें हम बम्बई में रहते थे, बम्बई जूहू में। तो हर समय मेरे को महाराज महाराज बोलते थे, गोपाल कृष्ण महाराज। ही वॉज मेरे वेरी रेस्पेक्टेड फॉर मी, मेरे बहुत रेस्पेक्ट करते थे। तो उन्होंने मेरे को जो है, उस समय कोई ज़्यादा भक्त नहीं थे, हम केवल प्रभुपाद के शिष्य लोग थे इस्कॉन में, भीमा प्रभु हम सब लोग जूहू मंदिर में। तो फिर गोपाल कृष्ण महाराज ने मेरे को जो है पूना का प्रेसिडेंट बनाया 83 में। वो जो अभी पूना का कैंप है, वो मंदिर, वो जो है वो मैंने भाड़ा में मैंने लिया था 5,000 रुपये में उस समय। आई ओपन द टेम्पल इन पूना। तो अभी वेरी सक्सेसफुल हो गया पूना मंदिर भी। तो उसके पश्चात जहाँ मेरे को ज़रूरत पड़ती थी गोपाल कृष्ण महाराज वहाँ मेरे को भेजते थे इंचार्ज। फिर उसके बाद पूना के बाद जो है फिर मुंबई में बोलाया, वहाँ मेंबरशिप डायरेक्टर बनाया गोपाल कृष्ण महाराज ने। फिर उसके पश्चात मेरे को जो है सूरत का प्रेसिडेंट बनाया, जहाँ क्योंकि मैं उस समय अच्छा कलेक्शन करता था। आई वॉज बिग कलेक्टर और बुक डिस्ट्रीब्यूटर ऑल्सो, सो मैंने लाइफ मेंबर मैं बनाता था। तो इसलिए महाराज मेरा बहुत बड़ा डिमांड करते थे हर समय, जो मैं मेरी सेवा उनको बहुत पसंद होती थी। तो महाराज प्रेसिडेंट घर से बोलते दधि प्रभु को इंकरेज करो, उसको जो है क्लास देने के लिए बोलो। तो बम्बई में मैं जब भीमा प्रभु जी प्रेसिडेंट थे, तो उस समय भीमा प्रभु महाराज ने बोला कि आप दधि प्रभु हर सैटरडे को जो है हिंदी में क्लास देने के लिए बोलो मंदिर में। तो मेरा हर शनिवार को और क्लास महाराज के द्वारा मैं हर संडे क्लास देता था हिंदी में। तो महाराज हर समय बोलते थे आप कीर्तन लीड करो, आप अच्छा गाते हो, और हर समय मेरे को यदा उदा कहीं नहीं जाना देते थे, वहाँ से वहाँ शिफ्ट करते थे। और मेंबरशिप में कभी सूरत, कभी पुणे, कभी बम्बई से फिर दूसरा जगह नहीं जाने का। तो वहीं बम्बई में मेरे को महाराज ने रखा। तो फिर उधर में फिर हम जो है गृहस्थ बने, तो भी महाराज ने बहुत अच्छी तरह से पूरा फैसिलिटी मेरे को प्रदान की थी। तो उन्हें बोला कि बहुत सेवा कर रहे हैं दधि प्रभु जी बोल के। फिर बाद में और कोई क्योंकि महामंत्र प्रभु जानते थे, क्योंकि वो महामंत्र प्रभु दिल्ली बम्बई में थे। तो महामंत्र प्रभु को क्योंकि वो वकील थे, तो वहाँ जो है तो किलागिरी करते थे। तो महाराज का बहुत प्रिय थे। तो महाराज तो महामंत्र बोलते थे, मीटिंग करते थे। तो मेरा ऑफिस भी सामने था, लाइफ मेंबरशिप ऑफिस में डायरेक्टर था। तो महामंत्र प्रभु जानते, तो इसलिए महामंत्र प्रभु कभी भी मेरे को हरे कृष्ण प्रभु जी मेरे को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। तो जब भी मैं महामंत्र प्रभु को देखता हूँ तो मेरे को गोपाल कृष्ण महाराज की याद आती है। हाँ, तो आज भी सुबह कृष्ण भगवान के सामने मेरे को हरे कृष्ण बोल रहे थे। तो कभी भी वो है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि गोपाल कृष्ण महाराज मेरे को बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छा मानते थे। इसीलिए मैं जो है, तो इसलिए भीमा प्रभु मेरे को भी बहुत अच्छा मानते हैं। फिर अभी लास्ट में 5-6 साल पहले तो ब्रजहरि प्रभु ने बोला कि गोपाल कृष्ण महाराज की दधि प्रभु को गुरुशिप को साइन करना है, गुरुशिप फाइल। तो महाराज बोला ठीक है कर दूँगा, लाइए मेरा ऑफिस में। तो भाई ब्रजहरि प्रभु लेके गए ऑफिस में और गोपाल कृष्ण महाराज साइन कर दिया गुरुशिप। तो ये उनका लास्ट प्रोग्राम था मेरे लिए। तो इसीलिए जो है, तो महाराज बहुत दयालु थे, बहुत कृपालु थे। मेरी पत्नी भी जो है गोपाल कृष्ण महाराज की शिष्य है और हमारे ऊपर बहुत दया किया। तो इसलिए इतना साल से मैं जो है 55 ईयर्स एंड ISKCON मैं गोपाल कृष्ण महाराज के द्वारा ही मैं टिका हुआ हूँ। ISKCON छोड़ के मैं कहीं नहीं गया। हाँ, ISKCON में रहा पूरा साल। तो इसलिए सेवा किया। कितने मेरे गुरु भाई लोग ISKCON छोड़ के गौड़िया मठ इधर चले गए, लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज बोलते थे कि आपको कहीं नहीं जाना है, डोंट गो टू गौड़िया मठ, डोंट गो एनीवेयर, स्टे हियर, एनी यू हैव अ प्रॉब्लम यू टेल मी, वी ट्राई टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। तो ये गोपाल कृष्ण महाराज, श्रीधर महाराज, भीमा प्रभु मेरे को बहुत अच्छा मानते थे। मुंबई में मैं सेवा करता था, तो इसलिए उन लोगों ने इंकरेज किया मेरे को। इसीलिए मैं अभी ISKCON में, अभी तो ISKCON में जिया हुआ हूँ, नहीं तो मैं अभी तो कहाँ हो जाता था। गोपाल कृष्ण महाराज की जय। थैंक यू, हरे कृष्ण, धन्यवाद। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी महाराज
I'd like to request Prito Prabhu. Then after that, would like to request Bhakti Brihat Bhagavat Swami Maharaj. Hare Krishna. Namo Vishnupadaya Krishna Vistaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Vinamani Namaste Saraswati Devi Gauravani Prashadini Nirvistesa Sunyavari I thought about one very special quality from my experience. I had to work with him quite intensely. He wanted me to be called to be C for parts of India, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, and even Vrindavan. And so I can understand one thing about Gopal Krishna Maharaj. He is one of the most hardworking, if not the most hardworking personality I've ever seen in ISKCON. A very hardworking man. He worked day and night, tirelessly, to spread Krishna consciousness. He was Prabhupada's man. I've seen this particularly in India. I did some preaching for a couple of years in India, that wherever he was responsible in India as a GBC, book distribution were thriving. People distributed large amounts of books, particularly his own. And there were many saintly devotees who were dedicated to Gopal Krishna Maharaj to preach Krishna consciousness by distributing books. I remember one devotee in Nijavatovsk, and he was a great Sankirtan devotee for more than 40 years. And one day he told his friend that I want to make my will. He said, why do you want to make your will? He said, Krishna told me, Lord Chaitanya told me that he's going to take me. He wrote his will. And his little possessions he had as a brahmachari to give it to this person, that person, that person. 1 week later there was a car accident. And so he died on the spot. And Gopal Krishna Maharaj told me he didn't feel the impact. Krishna took him away just before that. Before that, he took him home to the spiritual world. Very special person. I know another book distributor, disciple of his. He went into one town, it was Suzdal in Russia. Very conservative Russian Orthodox. Hundreds of churches and monasteries, etc. He tried to distribute books, he couldn't distribute a single book all day. Everybody said, no, this is not our religion. We cannot read this. So finally, he decided there is one church. I want to go in this church, there must be somebody. Otherwise, Krishna, why did you bring me here? Why should I come to this place where nobody wants to buy our books? So he went into the church, there was nobody there. But there was a little door, little open, with light leading to the basement. So he went into the basement. And when he was in the basement, he saw there was a monk, Russian Orthodox monk, in black, with a long beard, reading something. So when the monk heard somebody was coming, he put something under the table. And the devotee said, Father, Jesus has risen. I brought you a very special gift. The man said, what is that? He showed him Srimad Bhagavatam. The monk started crying. He said, he pulled out
And underneath the table, Srimad Bhagavatam. He said, I've been reading this Srimad Bhagavatam for the last 5 years, praying to Jesus and pray to Prabhupada and pray to Krishna, please send me somebody. Oh, somebody sent him a whole book, large amounts of books. I think even a whole set on the spot. So you can see how somebody is inspired by his spiritual master to go everywhere under all circumstances. So for book distribution, I can see, and I come myself from a book distribution culture originally, I can appreciate anybody who pushes book distribution because books are the basis. We distribute lots of books, every temple will be very successful, and the book distribution dies, that will be the end of the Hare Krishna movement. Number 2, I very much appreciate how Gopal Krishna Maharaj took care of his god brothers. Very exemplary. Sometimes I've not seen this, if not just the opposite. He took care of everybody, and so many god brothers of mine, like just Yasomati Nandan or Bhishma and Bhima Prabhu, and Vasu Ghosh. So many worked under him in all these years, and he would always be very protective. And I had the same appreciation and experience when I was in Vrindavan. He wanted me to come to India. It was not my idea, actually. It was his idea that I settle in India and practice Krishna consciousness here. So he cared for his god brothers very much so. He appreciated, like Prabhupada. He told us when he was in Germany that unless there's love and trust between the devotees, he said, this movement cannot develop. He said, this movement cannot develop if there's no love and trust with the devotees. And he was an example of that. He was very protective towards his god brothers, especially encouraged them. And so I was very glad when he asked me one day whether he could take over this ashram, sign it over to ISKCON. I signed it over to ISKCON. I wouldn't have signed it to many, but he's an expert negotiator. He said, you don't really need it. I said, that's a fact. So I'm very indebted to Gopal Krishna Maharaj for his leadership and his kindness, particularly to his god brothers, and his great love and determination for book distribution. There's another thing, a last thing. While preaching in Russia, I noticed that every temple had just little Gaunitai deities. It was part of the previous culture. And there was one temple in Omsk, beautiful temple, a lot of devotees, and I said, why don't you have Radha Krishna deities? We can't do that. I said, Moscow will be very upset with us. This is Siberia. I said, well, let me talk to Gopal Krishna Maharaj about it. So I talked with Maharaj about it, and he said, how do we do it? You should ask them for permission. I said, Maharaj, sometimes it is easier to be forgiven than to ask for permission. Let's just do it. He said, I organize everything, you pay for it. So he bought the deities in Omsk, big Radha Krishna deities. They were installed. They're the only Radha Krishna deities in all of Russia. And that was his mercy. To get Russian, and on Janmashtami, this place is packed. All of Russia comes for the worship of Radha Govinda in Omsk. So I'm grateful to Gopal Krishna Maharaj for all the work he did. I mean, how can you argue with success? Not just one temple in Delhi, one temple after the other. Now we have 20 temples. How can you argue with success? Such a successful devotee, so fixed in serving Srila Prabhupada. Very selfless, very hard working. He never had a house, he never had any place for himself. I've slept in various places where he slept just a simple bed. Even in Dwarka temple, there's just one room there Gopal Krishna Maharaj resided. He didn't have a house, he didn't have nothing. He just said what he was carrying, his body practically speaking, going from one place to another and preaching and preaching and preaching, because preaching is the essence and books are the basics. Srila Gopal Krishna Maharaj ki jai. Hare Krishna. Thank you, Prito Prabhu.
I'd like to request His Holiness Bhakti Brihat Bhagavat Swami Maharaj to speak on. Our Guru Maharaj. And the next one will be His Holiness Prabodhananda Saraswati Swami Maharaj. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam bhavanabhyo vaishnavabhyo namo namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. About 25 years ago, I was serving here in Vrindavan as the co-president of the Shri Krishna Balaram Mandir. And one of my main GBCs was Sripad Gopal Krishna Goswami Maharaj. Now, I wouldn't give detailed incidences in my association with him. But I'll just say one thing, that sometimes I may make a decision on a particular devotee, and due to my, you could say, Ishvara Bhav, like controlling nature, and also due to my fault-finding mentality, I may make a decision on the devotee that could be very harsh on the devotee. Then subsequently, Sripad Gopal Krishna Maharaj used to come visit. I mean, practically Vrindavan is his home. He was the most, you could say, he was the most kind GBC that spent most of the time in Vrindavan with us, even at that time. So in one instance with a particular brahmachari, when I made a decision, the way he spoke to me was, it's like, he's very gentle, he's very sensitive, and he's very hope-giving. The way he spoke to me, he made me feel that I didn't make a wrong decision, but at the same time, I didn't give hope to the devotee. And I could understand, how is he seeing that and I can't see it? So we called the devotee into the room, and then I started speaking to the devotee in front of him. And he was so careful that he will not, you could say in one sense, disagree with the temple president. He would not use his GBC portfolio in a dominating or domineering way. I never experienced that with him. But he went a little beyond that. And beyond that indicated that he didn't use his position as a GBC or even initiating guru. He just saw the potentiality of this person, which I didn't see, that he must go back home, back to Golok Vrindavan. He just saw that potentiality. And then I could realize that I learned one thing from him. Never give up on a devotee. And I'm sure all of you who are closely associated with him as his direct disciples would see that. He never gave up on any devotee. Even if the devotee was practically, in the sense also, sort of speaking a little bit offensive against him, he never gave up on that person. Never gave up.
There are instances like that which I'm aware of. Then in my recent last, you could say, 6 weeks or so, this is now, I went to ISKCON Rohini first, and I spent about a week in each place, then ISKCON Kurukshetra, and then ISKCON Ghaziabad. I was there recently in the last 6 weeks. And my sort of service, which I'm pretty attached to for some reason, that I structure courses and do curriculums and teach. And one of the principal courses that I teach almost for the last 30 years is called the Japa Ashraya course. And I've been teaching it all over the world, including going to His Holiness Guru Prasad Swami's zones in Mexico and Trinidad and Guyana over the years previous. So, in this last 6 weeks, in Rohini temple, ISKCON Rohini, 250 devotees attended. And in Kurukshetra, which they restricted to like the base devotees, and some devotees came from Chandigarh and also Yamunanagar, that's another 130 devotees came. And in Ghaziabad, another 100 or so devotees attended. Now, I teach courses all over the world. And I could safely say that when I come to this northern side of Bharata Bhumi, including places like Chandigarh also, Noida and other places, Delhi, NCR, when I teach, the enthusiasm of the devotees inspires me to be with them more. In the sense they come in like hundreds of numbers. So I'm thinking, oh, this must be coming from somewhere. Like that. And then previously, when I used to do courses in Delhi NCR region, His Holiness Gopal Krishna Maharaj used to get the reports from the devotees who attended. And immediately he calls me up on the phone. And he said, you should take lunch with me. I used to go and take lunch with him. He says, the service you're doing is most important to me, because ultimately it's the service to the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. That's over the years. Now the important point I would like to make now is that Sripad Gopal Krishna Maharaj has not disappeared. Has not disappeared. Because in these last 6 weeks, I felt that in these 3 temples. So His mercy, His blessings is accompanied primarily by Srila Prabhupada's mercy and blessing. It's accompanying that. And I felt it. And I felt it deeply in these 3 temples in the last 6 weeks. It's very much present amongst all of us. Now, sometimes when a leader, especially an initiating guru or an acharya leaves, there's problems. But I went to these 3 temples. There may be problems. That's always there. But it's not so significant, the problems, as much as they are affectionate by the blessings and mercy of Sripad Gopal Krishna Maharaj to take the shelter of the chanting of the holy name. And that really inspires me to go back to these temples, and they inspire me to chant Hare Krishna further again with them. And that's the goal. That's the goal. So I'm very blessed in so many ways by Sripad Gopal Krishna Goswami Maharaj as one of my authorities in my services over the years. At the same time, I'm even more blessed that most of his senior disciples are my closest friends in the International Society for Krishna Consciousness. And one of them entered into the sannyasa order today.
His Holiness Bhakti-Vedanta Rukmini Krishna Goswami Maharaj ki. And I also pray to him in line with the blessings and mercy of Sripad Gopal Krishna Maharaj, that he never ignores or neglects me, because I deserve his mercy as one of his close friends. And also here in Vrindavan, we have so many wonderful devotees. They also say that when you serve in Vrindavan, you take sannyas quickly. I served in Vrindavan and I entered the sannyas ashram, and the first sannyasi from our brahmachari ashram at that time is Holiness Prabodhana Saraswati Maharaj. I assisted that he must take sannyas with Gopal Krishna Maharaj. He's here with us, right? Yeah. And then His Holiness Bhakti Ashraya Vaishnava Maharaj, and our own His Holiness Bhakti Anugrah Janardhan Swami Maharaj. So if you want to take sannyas, come to Vrindavan town and serve here and enter the sannyas ashram by the mercy of Sripad Gopal Krishna Goswami Maharaj and the senior devotees. Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Shri Vrindavan Dham ki, Shri Gopal Krishna Goswami Maharaj ki, the International Society for Krishna Consciousness ki, Tathai Gaur Premanande. Vrindavan is everywhere, so stay where you are. He has to manage you if you come. It's a matter of consciousness. Come to Vrindavan. You come to Vrindavan, but don't stay too long. Prabhupada says 3 days. So I would like to request His Holiness Prabodhananda Saraswati Swami, and then it'll be followed by Shamba Prabhu. He was the first temple president of ISKCON Punjabi Bhag, the original Punjabi Bhag. हरे कृष्ण। तो एक छोटा वैष्णव भजन गाएंगे। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षा अतिहीन। गुरुदेव सकल सहने बल दिया करो सकल निज माने स्पृहाहीन। सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ यथायथ। सकले तबे तो गाइब हरिनाम सुखे तबे तो अपराध हबे हत आमार। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करे दासे तृणापेक्षा अतिहीन। गुरुदेव
कबे न कृपा लभियाए जन कृतार्थ होइबे नाथ कबे न शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन शक्ति बुद्धि करो मोरे आत्मसाथ गुरुदेव का योग्यता विचारे किछु नाही पाई तुम्हार करुणा सार योग्य करुणा ना होइले कांदिया कांदिया करुणा ना होइले प्राण ना राखिब आर आमी गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो एई दासे ऋणापेक्षा अतिहीन गुरुदेव सकल सहने बल दिया करो सकल सहने निज माने स्पृहाहीन O Gurudev, give to this servant just one drop your mercy. I am lower than a blade of grass. Give me strength. Let me be as you are without desire of aspirations. Offer you all respect, for thus I may have the energy to know you completely. Then by chanting the holy name of in great ecstasy, all my offenses will cease. O Lord and Master, when will such mercy fall to this one who is weak and devoid of intelligence? Allow me to be with you. If you examine me, you will find no qualities. Your mercy is all that I am made of. If you are not merciful unto me, I can only weep, and I will not be able to maintain my life. Srila Bhakti Vinod Thakur ki jai. Hare Krishna. तो आज हमारे परम आराध्य गुरुदेव हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वितीय तिरोभाव महोत्सव के लिए हमें यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो इसलिए गुरुदेव को मैं पहले प्रणाम भी कर लेता हूँ। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं जह प्रकाश्य वितिर्यः प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। तो आज विशेष हम सभी वरिष्ठ भक्तों प्रभुपाद जी के शिष्यों से गुरु महाराज जी की गुणगान को श्रवण किए। सबसे पहले अब गुरु महाराज के लेक्चर भी हम सुने। गुरु महाराज जी कहते कि चाहते कि आप जितने भी है बैठे हैं सभी लोग गोदास न रहे, क्या बने, गोस्वामी बनना है। प्रचार कौन करेगा? प्रचार करेगा जो गोस्वामी होगा, प्रचार करेगा। तो इसलिए कहते थे कि प्रचार करने के लिए टीचिंग इज़ द एसेंस, क्योंकि प्रभुपाद जी चारों बात कहें।
Books are the basis. Preaching is the essence. Purity is the force. Utility is the principle. तो इसलिए गुरु महाराज जी सब समय कहते कि प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ना। आप प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ते हैं। गुरु महाराज जी भी मैं देखा कभी भी बाहर में किताब पढ़ते नहीं थे, सबसे प्रभुपाद जी किताब ही पढ़ते थे। कई लोग नए नए पुस्तक लिख कर ला के महाराज को देते थे पुस्तक के। गुरु महाराज ने बोला महाराज आप पढ़ते नहीं पुस्तक, ऐसे नया बुक है, बोला जस्ट कीप इट। I don't think something is new there, more than something given more than Prabhupada. And Prabhupada books, everything is there. तो उनका पूरा विश्वास था कि प्रभुपाद जी किताबों में सब कुछ है, दूसरे कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभुपाद जी के बुक्स को पढ़ने के लिए भी बहुत जोर देते थे गुरु महाराज। किताबों को पढ़ें और पढ़ने के बाद क्या करना है, वितरण करना। प्रीचिंग इज द एसेंस। एंड गुरु महाराज जी कहते हैं कि प्रचार का अर्थ है कि प्रभुपाद जी की किताबों को बांटना। प्रभुपाद जी की किताब को बांटना ही प्रचार है। आप क्या प्रचार करोगे? प्रचार तो प्रभुपाद कर चुके हैं। आप केवल उनकी किताबों को लेकर लोगों के पास पहुंचाना। हमारे प्रभुपाद जैसे कहते थे कि आपका 2 मिनट का लेक्चर में है कौन क्या उसका क्या वैल्यू पड़ेगा, उसका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास उस तरह का शुद्धता नहीं है, प्यूरिटी नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज चाहते थे कि गोस्वामी भी बने, गोस्वामी बनकर फिर दूसरों को ज्ञान को कुछ प्रचार करें। और इसलिए किताब को वितरण के ऊपर प्रभुपाद जी ने हमारे गुरु महाराज सब समय बल देते थे। हम जैसे देखते हैं उनके प्रणाम मंत्र में ही कहते प्रभुपादस्य साहित्यम जह प्रकाश्य भितरेच प्रचारम कृतवान साधु। सब समय प्रचार में लगे रहते थे। आप सभी कई ग्लोरिफिकेशन सुने हैं किस प्रकार वो सभी जहाँ भी जाते थे। मैराथन महीना में इंडिया के अंदर तो प्रत्येक मंदिर जाए, उनके जोन में जितने मंदिर सभी मंदिर में जाते थे, विजिटिंग करते थे, किताब के बारे में लोगों को प्रेरणा देते थे। इसके बाद रशिया अन्य इंडिया के बाहर में भी रशिया में जहाँ जहाँ उनकी जोन सभी सर्वत्र भ्रमण करते थे और सभी को प्रोत्साहित करते थे किताबों को वितरण करना। डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। अभी ब्रजविलास प्रभु कहते थे कि बस किताब वितरण में हमेशा दिल्ली ही फास्ट होता था, लेकिन जयपताका महाराज को पूछे कि हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज पूछे कि हमारा मंदिर भी कभी कभी दे यहाँ मायापुर भी फास्ट होना चाहिए, तो कहे कि जाके गोपाल कृष्ण महाराज से ही आशीर्वाद लो। वो आए, आकर सभी लोग गोपाल कृष्ण महाराज हमारे गुरु महाराज से आशीर्वाद मांगे। उस साल मायापुर फास्ट। तो इसलिए तो उनकी गुरु महाराज ने किताब डिस्ट्रीब्यूशन पर बहुत बल देते थे। बृहत मृदंग हैं, कहते हमें क्या प्रचार करेंगे, जो पुस्तक कोई लेगा प्रभुपाद जी किताब पढ़ेगा उसी से ही जो उसको जो ज्ञान मिलेगा उसका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि प्रभुपाद जी की जो दिया हुआ ज्ञान, कृष्ण वाज प्रॉम्प्टिंग, आई वाज राइटिंग। प्रभुपाद जी कहते थे कि कृष्ण कह रहे थे और मैं लिख रहा था। तो इसलिए भक्ति वेदांत तात्पर्य की विशेष महत्व है। और गुरु महाराज जी कहते थे इसलिए किताब को वितरण करो। और प्रीचिंग इज द एसेंस और प्यूरिटी, जिसके पास शुद्धता है। इसलिए पवित्रता को बढ़ाने के लिए हमें गुरु महाराज केवल प्रचार नहीं करते थे, इनकी स्पिरिचुअल प्रोग्राम मॉर्निंग साधना हम जब देखेंगे शुरू से लेकर इनका जो मॉर्निंग साधना मंगला आरती से लेकर कितने, यदि राधेश्याम प्रभु बोलते थे कि रात को 12 बजे आज सोया हूँ, कल सुबह हो सकता है मैं मंगला आरती में, कल सुबह नहीं आऊँगा मंगला आरती लेकिन कहते वो उठ के आगे देखते तो महाराज आरती कर रहे हैं। तो इसलिए सभी मतलब आप खुद के पर्सनल डेटी रखे हैं, अपने पर्सनल डेटी की सेवा करके फिर डेटी, लेकिन मंदिर का जो विग्रह है उनका सेवा से रुकते नहीं थे, मंदिर का सेवा भी करते थे। ये डेटी महाराज ने प्राय रखे अपने पर्सनल डेटी, जब उनके हार्ट का है 91, 92, इसका पहले डेटी नहीं रखते थे महाराज। इसका पहले मैं रखता था, सारे सालाग्राम मेरे पास और डेटी थे। इंद्र प्रभु का पास रहता था तो सारे डेटी थे। मुझे महाराज डांटते थे, डेटी से वो हटाओ, ये क्या कर रहे हो।
प्रभुपाद जी से पर्सनल सब रखे हैं, सारे डेटी सब रखे हैं। हाँ, तुमको सेपरेट डेटी रखने की जरूरत नहीं, मुझे डांटते थे। लेकिन बाद में फिर महाराज ने जब इनकी गॉड ब्रदर लोग ने सजेशन दिए, इनके हार्ट प्रॉब्लम हुआ कि बोले आप इतनी प्रीचिंग करते, ट्रैवलिंग करते, कुछ डेटी भी रखो। इसलिए कि उनके इंटीमेट गॉड ब्रदर लोग सब बोले, फिर डेटी महाराज रखे। प्रारंभ से डेटी नहीं रखे थे, पहले 91 तक उनके पास कोई डेटी बेटी नहीं था। तो लेकिन फिर भी महाराज देखिए जो डेटी फिर कितनी अपने पर्सनल साधना में फिक्स रहते थे। तो हमें उसी आदर्श के आधार पर हमें भी हमारा जीवन को सुधारना चाहिए। हम कितने साधना में भी स्ट्रांग होना चाहिए, साथ साथ प्रचार की पर भी समय बिताना चाहिए। विशेष रूप में बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे गुरु महाराज को प्रसन्न करता था। किताब वितरण करें, हरिनाम संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, चांटिंग, डांसिंग एंड फेस्टिंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु महाराज की जय। Thank you, Maharaj. Oh, you dropped something. Now I would like to request Shamba Prabhu, and then next will be Mohan Rupa Prabhu. After, yes, and then Matures Prabhu, Brajabasi. He has some very important information to tell us. 2 minutes only. My most humble obeisances, the Lordship feet of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. My most humble obeisances to Srila Prabhupada and Guru Parampara. And my most humble obeisances to all of you, all the assembled Vaishnavas. It was my good fortune, by the will of Providence, I was with Maharaj, serving thick and thin, from 83 to 92, sometime. And those are the days, it's difficult to explain, you cannot relate. But only few things I want to narrate. I don't think so Maharaj is going to give me so much time, but just I'll take few minutes, explain few things. You kindly hear carefully, otherwise you may not understand. It was way back in 84, in the beginning, 83, there was discussion. His Holiness Gopal Krishna Maharaj was GVC for Delhi and that area, and also Bombay, Gujarat, other Maharashtra. And Vrindavan, it was different GVC, and there was a change of guard, and there was a discussion. And because I was with them as a president, I was here also for some time. Then I shifted to Punjabi Bagh. So it was discussed that Bhagwan Maharaj is supposed to get the this area. And as we discussed that among 26 qualities of Vaishnavas, one is the expert. And believe me, it was, I think, end of December 83 or 1st January 84, I don't remember the month. But all of a sudden, I got phone call from Gopal Krishna Maharaj. He said, Samba, I want to speak to Tamal Krishna Maharaj. Tamal Krishna Maharaj with me. So I gave the Maharaj to call, the Maharaj, you want to speak to you. He said, he told very clearly that, Maharaj, I want to invite you. He wanted to invite Tamal Krishna Maharaj to get a class for giving class. So as an assistant, I went there. And after the discourse, Bhagavatam class,
Maharaj spoke to Tamal Krishna Maharaj for half an hour, 1 hour. And the whole shift of paradigm. And then instead of Bhagavan Prabhu, this Vrindavan Dham went to His Holiness Gopal Krishna Swami Maharaj. His Holiness Gopal Krishna Swami Maharaj ki. This is the expertise of a saintly person. It's not just saying something. And you all know that among all the GBCs, he was the only one from India as a GBC. And all are from America. And to deal, it's a tough job. But Maharaj had I don't know what sort of quality. And I have seen his hand also, but his hand is super clear. Nothing was there. That means the last is totally going to Golok Vrindavan, back to Godhead. Gopal Krishna Swami Maharaj ki. So many things happen. And one of the things I remember in 87, there was a lot of turmoil in ISKCON. And one time I asked Maharaj, what is this? He said, Samba, I have given my life to Srila Prabhupada. Whatever goes on, I'm here. You don't worry about it. And Maharaj helped me in many situations. And there was those days there was no vehicle. Only in Delhi I had, Vrindavan also there was no vehicle. Delhi also no vehicle. I had one high roof van. And one time I saw, somebody told me Maharaj came from the airport by auto. I said, Maharaj, when I'm there, I have the vehicle. You give me the information, I'll come and pick you. So few times I picked up. Maybe after 1 year, we purchased another vehicle. So we had a lot of association, a lot of program together, and then invited to different live member house for satsang, bhajan, kirtan. We had many program we arranged in the school, college, university, even Delhi University also we did program. So I had a very thick and thin association, and many things, like some of them they discussed, that Maharaj was never taking proper rest. Believe me, he used to come, by the time he comes, it's 2 o'clock from the airport, from abroad. And then by again 4 o'clock, he's ready for Mangalarti. I said, Maharaj, if you do that, your health will get spoiled. And believe me, next day also, no rest, just meeting devotees and all. And one of the best quality Maharaj having, any even small devotee, he would never say no. Anybody want to meet and talk to him, any problem, he would discuss. And he would discuss heart to heart. If it is complex problem, still he would have discussed and try to sort out and discuss one after another. He'd never say, no, I don't know him, I'm not interested. So that is the best quality I saw with Maharaj. It's very, very keen to see that and you see, so long Maharaj was chairman in India, Bureau, there is no problem. Now you can see, you are hearing some of the things, but somehow or other he knows the art, how to sort out a problem. That's called expertise. And even the dedication, what I see that Maharaj was very really, never bothered about rest. Right? Morning, doesn't matter what time he sleeps, even if it's 11:30, 12 o'clock. In the morning, 4 o'clock, he's there for doing arti. Here, there, everywhere. And at last, I had many discussions with him. Maharaj also helped me to become a president in the Hyderabad temple. He's the person who was pushing, so kind of him. And the last discussion I had with Maharaj, that Samba come to Dehradun. It's a beautiful place. I couldn't come. And he told me that I heard your wife is quite famous, Nitai Savini. So I want you and Nitai Savini should visit all of my zone and you give some discourse here. Just give it Harikatha. And thereby whatever you can do, you do it. I sincerely thank Maharaj for his kind and many good things. I was too young to many program we did in Punjabi Bagh, the club. I was too young and many things I learned from him. So I'm always grateful to him, and I always talk about him, how Maharaj taught me many things. And this is where I have given my life. I'm with him last 49 years. So Maharaj will not give him 49 minutes also. So whatever I can say, I have told. All I can say, nutshell, I have learned a lot
from him, and as all we are disciples, what we can do. Maharaj lived with Srila Prabhupada 10 years, and he lived other years in separation serving his Guru. So it's our duty to live his legacy in remembering him in separation, serve as Maharaj has told. Thank you very much. Hare Krishna. Haribol. Thank you, Sambha Prabhu. I'd like to request Mohan Rupa Prabhu, and then Mathuresh Prabhu. We only have one more hour though. I wish time will expand as much as possible, but 60 minutes is 60 minutes. So hopefully everyone will have 2 minutes each, so we can call many more devotees. However, we'll have another session in the evening around 4:30. Okay, so please, I apologize if I'm not able to call your names in first half, but hopefully second half. Thank you, Maharaj. Om Jnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshuronmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Gopal Krishna Goswami Iti Namine Prabhupadasya Sahityam Ya Prakasha Vitiryacha Pracharam Kritvan Sadhu Bhagavad Padaya Te Namaha. Hare Krishna. तो आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, आज के इस तिरुभाव दिवस के उपलक्ष्य में आप सब यहाँ विराजमान हैं। गुरु महाराज के स्मरण करने का हम सबको मौका मिला है, ये हमारा सौभाग्य है। जितना हम गुरु महाराज का गुणगान करेंगे उतना और करीब जाएंगे उनके हम। और तो गुरु महाराज जो है बहुत ही विशेष, श्रील प्रभुपाद जी के तो अनेक शिष्य हुए हैं, लेकिन गुरु महाराज जो हैं वो विशेष हैं। सुखदेव गोस्वामी जब अपनी माता के गर्भ से निकल के जा रहे थे, सुखदेव गोस्वामी थे ना, श्रील वेद व्यास जी के शिष्यों से उन्होंने श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों को सुना था और श्रवण करके वापस आए थे। भगवान श्री कृष्ण के गुण और उनके रूप का वर्णन सुनकर सुखदेव गोस्वामी वापस लौट आए श्रील वेद व्यास जी के पास श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए। तो इसी तरह से हमारे जब गुरु महाराज के जो गुण हैं, उनके जो कार्यकलाप हैं, उनका श्रवण करके तो मायावादी, छायावादी, भौतिकवादी जितने वादी हैं वो सभी आकर्षित होते हैं। आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथ अभी गुरु क्रमे कुर्वन्ति अहित किम भक्तिम इत्थम बुधो गुणो हरि। तो गुरु महाराज का गुण, उनका कार्यकलाप अद्वितीय है, अद्भुत है। कुछ गुणों का और कुछ उनकी घटनाओं का वर्णन मैं करूंगा समय का ध्यान रखते हुए। तो गुरु महाराज वज्र के समान कठोर भी थे, प्रचार में सिंह की तरह थे और भक्तों के समाज में मेमने की तरह रहते थे। सच बोलने से कभी घबराते नहीं थे, बड़ी ही मधुर भाषा में बताते थे सच। और एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति आया, बहुत बड़ा बिल्डर था वो, और वो बिल्डर ने बताया कि वो क्या क्या करता है कंस्ट्रक्शन में। तो गुरु महाराज ने कहा कि आपके 5 स्टार होटल्स भी हैं? मैंने कहा हाँ है। आप अपने होटल में बीफ बेचते हैं? बोलते हैं हाँ महाराज जी क्या करें, बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं तो बीफ तो बेचना ही पड़ता है। गुरु महाराज ने बहुत ही पोलाइटली मधुर वाणी में उत्तर दिया, कृपा करके आप बुरा ना माने। पहला लाइन ये था उनका, इसके लिए तो आपको नरक जाना पड़ेगा। सीधा मुंह पे, कोई भय नहीं। अभी पीछे आए थे अनिल अग्रवाल जी इंग्लैंड से, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। टेम्पल हॉल में गुरु महाराज के समक्ष खड़े होकर उन्होंने कम से कम 15-20 मिनट का गुणगान किया। उन्होंने कहा
आज अगर गुरु महाराज बाहर होते, आप होते, महाराज जी बाहर होते, हमारी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट होते, हम सबको पीछे छोड़ देते, आप टाटा बिरला सब भूल जाते हम। और इनको तो रंच मात्र भी भय नहीं है, ऐसा बोले वो, बिल्कुल भी भय नाम की कोई चीज ही नहीं है, सीधा प्रीचिंग में इतना बोल्ड। मुझे 92 की बात बता रहा हूँ मैं, कंस्ट्रक्शन का टाइम था टेम्पल का, तो महाराज जी को, गुरु महाराज जी को मैं एक मेंबर से मिलाने गया था, डोनर थे वो, डोनर तो नहीं थे, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट थे लेकिन डोनर नहीं थे। हर इंडस्ट्रियलिस्ट डोनर नहीं होता, और कुछ ऐसे डोनर होते हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होते। तो उनके पास मैं ले गया कनॉट प्लेस में, और वैसे तो सरनेम तो उसका जैन था। फर्स्ट फ्लोर में गए तो महाराज जी बैठे रिसेप्शन में, महाराज का बैठ जाओ मेरे साथ। मैंने कहा महाराज आपके साथ कोई बात नहीं, ये ऑफिस है ही। तो फिर महाराज अंदर बुलाया उन्होंने थोड़ी देर के बाद, और वो पाँव में पाँव रख के ऐसे बैठा हुआ था, बड़े शान से, जो जैन था, कंपनी का चेयरमैन जो था। और गुरु महाराज ने उसके समक्ष जब बात किया तो बिल्कुल कैनेडियन एक्सेंट में बात किया। मैं हैरान हो गया, महाराज ने एकदम एक्सेंट कैसे चेंज कर दिया। ऐसा कैनेडियन एक्सेंट में बात किया, वो बिल्कुल एकदम दंग रह गया। उसको लगा भैया ये तो इंटरनेशनल व्यक्ति है, ये तो हमने सोचा कि यहीं से आए ईस्टर्न क्लास से। तो महाराज जी ने पूछा, गुरु महाराज ने, आपका बिजनेस किसका है? बोलते हैं मेरा पास टेक्सटाइल का बिजनेस है, यहाँ पे मथुरा रोड में हमारी फैक्ट्री है, और दूसरा जो है फिर हम लोग बॉम्बे में भी है, हमारे बॉम्बे बिवरेजेस के नाम से। अरे बॉम्बे बिवरेजेस? गुरु महाराज कहते हैं आप तो जैन हैं, जैन होकर आप शराब बेचते हैं। अब उसके ऑफिस में क्या था, जो उसका सिस्टम था, उसका ट्रेडिशन क्या था कि ऑफिस आवर्स के बाद वो ड्रिंक करता है, और कि सेक्रेटरी रोज आकर गंगा जल छिड़कती है उसके बाद। बोला हमें ये क्यों करते हैं? बोलते इस स्थान को पवित्र बनाने के लिए। तो गुरु महाराज को जब बोला तो गुरु महाराज बोले कि आप तो जैन हैं, जैन होकर आप शराब बेचते हैं। तो इस तरह मैं ये बताना चाह रहा था कि गुरु महाराज कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड, कितने बोल्ड थे, और दूसरा वैष्णव के साथ, भक्तों के साथ उनकी विनम्रता देखकर तो पत्थर भी पिघल जाए। एक भक्त जो आया, उसने अपनी समस्या बताई, नहीं हमने बताया गुरु महाराज को कि महाराज एक भक्त है, उसने नियम तोड़ दिया है, और समस्या ये है। उसने गुरु महाराज का बुलाओ उसको। तो वो आया, गुरु महाराज ने पूछा कि मुझे पता चला है कि आपने कोई नियम तोड़ा है। वो रोने लग गया। वो भक्त गुरु महाराज के जैसे ही सामने आया, उसकी आंखों से आंसू झरझर करके बहने लगे, और जैसे ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसी समय गुरु महाराज की आंखों से भी आंसू बहने लगे। हमने सोचा उसके बाद शायद डांटेंगे, कुछ बोलेंगे, उसके बाद कुछ नहीं बोला महाराज ने, सिर्फ एक ही लाइन बोली, इसने अपनी गलती मान ली है। दैट्स ऑल, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। उसके बाद कुछ कहा ही नहीं महाराज ने, इसने अपनी गलती मान ली। फिर हमने उसको पनिशमेंट दिया था 3 महीने किसी एक क्वारंटाइन कह लीजिए, एक रिमोट टेम्पल में जाने के लिए। और गुरु महाराज इतना प्रेम से उसको बोले, आप चिंता मत करो, 3 महीना वहाँ जाओ और वापस आना, वापस आके फिर से सेवा करना, ठीक है? दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। उसके बाद उनका हृदय तो इतना जो है मखमल के समान कह लीजिए, मक्खन के समान जो है हृदय था गुरु महाराज का। उनका हृदय तो इतनी जल्दी पिघलता था, अगर कोई उनकी प्रशंसा भी करता कि आपने इतनी सफलता प्राप्त की है, इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, इतने ग्रंथ बांटे हैं, तो वो सुनकर खुश नहीं होते थे। उसी समय गुरु महाराज की आंखों से आंसू बहने लग जाते थे। फिर वो बोलते थे ये सब मैंने नहीं किया, सब श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हुआ है। कहने मतलब से श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि ISKCON में कोई बड़ी बात नहीं है कि कौन बहुत ऊंचे पद में जा रहा है या ऊंचे स्थान में जा रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ऊंचे स्थान में जाने के बाद भी, ऊंचे पद में जाने के बाद भी वो कितना विनम्र बनता है। और इसके सबसे बड़े उदाहरण हमारे गुरु महाराज। एक सिर्फ मैं बताऊंगा घटना, प्रभु महाराज इशारा कर रहे हैं घड़ी की तरफ देखकर, तो एक घटना बताऊंगा। उनका सेवा का जो भाव था, सेवा से जो आसक्ति थी, वो तो अकल्पनीय है। हमें देखिए कोरोना काल में गुरु महाराज ने सबसे अधिक समय, बुरा मत मानेगा, आप द्वेष भी मत करिए हमसे, गुरु महाराज ने सबसे अधिक समय श्री श्री राधा पार्षदी मंदिर में बिताया। ये उसमें तो सच आपको मानना पड़ेगा, आप सब स्वीकार करते हैं इस बात, करते ही नहीं करते हैं बताइए?
उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है। हम जैसे नालायक लोगों को बनाए रखने के लिए उनको रहना पड़ा वहाँ पे। कोरोना काल में 2 साल लगातार महाराज रहे, बताइए। अच्छा क्या हुआ, कुछ भक्त बीमार पड़े हुए थे, वो ट्रीटमेंट ले रहे थे आयुर्वेदिक, और वो अलग से प्रसाद भी ले रहे थे प्रसादम हॉल में। गुरु महाराज जगन्नाथ जी का दर्शन करने प्रसादम हॉल से निकल रहे थे। उन्होंने पूछा, आप भक्तों के साथ प्रसाद क्यों नहीं ले रहे हैं, आप अलग से क्यों ले रहे हैं? पहला क्वेश्चन। उन्होंने कहा, गुरु महाराज हम इलाज करा रहे हैं और इसलिए हमारा डाइट अलग है, इसलिए हम अलग से ले रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा, आप लोग बीमार हैं, इलाज करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए गुरु महाराज का क्या है, आप दोनों की सेवा क्या है? मतलब वो बीमार है, प्रश्न क्या है गुरु महाराज का, आपकी सेवा क्या है? उन्होंने कहा, गुरु महाराज अभी तो कोई सेवा है नहीं, अभी तो फिलहाल हम लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं। गुरु महाराज ने आगे कुछ बोला नहीं, उन्हें एक ही लाइन बोल के आगे निकल गए। उन्होंने कहा, अगर मेरे पास सेवा ना होना तो मैं जीवित नहीं रहूँगा, मेरे पास अगर सेवा ना हो तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। ये था उनका सेवा से आसक्ति, इतनी आसक्ति थी कि श्वास कितना भी खराब हो, पार्किंसन हो, कुछ भी हो, लेकिन मंगल आरती में आना जरूरी है। और हाथ जिस तरह से गुरु महाराज घुमाते थे, वो तो बाप रे, देख के बड़ा हमें दर्द दुख होता था। लेकिन वो मंगल आरती करना है तो कैसे भी करना है। उनका जो है फिजिकल बैलेंस भी वो लूज कर रहे थे, कई बार हिलते थे आगे पीछे, पीछे एक भक्त को खड़ा होना पड़ता था, और बड़ी मुश्किल से महाराज से हाथ घुमाते थे, बड़ी मुश्किल से। और हम सबको ये सिखाते थे, आपके पास तो हाथ भी हैं, पाँव भी हैं, फिर क्यों नहीं करते आके आरती? तो इस प्रकार जो है फिर गुरु महाराज, और एक बार तो कई बार ऐसा होता तो महाराज दिखते नहीं थे मंगल आरती, ऐसा कई बार हुआ स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण। अजय गौरांगपुर कहाँ है, बैठे हुए यहीं कहीं बैठे हैं। अजय गौरांगपुर यहाँ हैं, ये बैठे दाईं तरफ, ये आके मुझे बताते हैं, प्रभु जी गुरु महाराज ने बोला है आपको बताने के लिए कि गुरु महाराज अपने रूम से मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं, टीवी स्क्रीन ऑन है। मतलब हम ये ना सोचे कि महाराज शायद उठे ही नहीं, उठे हैं, ऊपर नहीं आए हैं, लेकिन अपने कमरे से मंगल आरती में भाग ले रहे हैं। उनकी जो साधना ऐसी थी जैसे श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी की साधना, कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी की साधना कैसी थी, जैसे पत्थर की लकीर, और पत्थर की लकीर ही थी उनकी साधना। गाड़ी में जाएंगे, अगर गौर आरती का समय है, संध्या आरती का समय, पीछे भक्त को बोलेंगे संध्या आरती का समय, संध्या आरती गाओ। और गुरु पूजा का समय है, अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो बोलेंगे किसी भक्त को गुरु पूजा गाओ। हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, 95 की बात बता रहा हूँ मैं, हॉस्पिटल में एडमिट थे पहली बार जब हार्ट स्ट्रोक हुआ था। और उस समय साथ में कृष्ण प्रिया प्रभु भी थे उसी रूम में, और महाराज सुबह सुबह 4:30 बज गए, आंखें खुली हुई है महाराज की, लेटे लेटे बोल रहे हैं कृष्ण प्रिया प्रभु को मंगल आरती गाओ, गुरु अष्टकम गाओ। तो इतना उनका एब्जॉर्प्शन था साधना में, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी काल हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी देश क्यों ना हो। और उनका जो ट्रैवलिंग का शेड्यूल है, भक्ति अनुग्रह जनार्दन स्वामी महाराज से सुनिएगा कि ट्रैवलिंग का मतलब क्या होता है कि आत्मा और शरीर अलग हो जाएगी हमारी। I was saying that how much traveling Maharaj was doing, and His Holiness Bhakti Anugrah Janardhan Swami Maharaj is a live example here. He knows the whole story, how Guru Maharaj was traveling all over the world internationally. और आखिर मैं कह के विराम दूंगा, आप सब यहाँ पर आए हैं। गुरु महाराज मुझे एक बार बोला, क्योंकि हम लोग प्रीचिंग करते थे तो इतना रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं थे। गुरु महाराज ने कहा, मोहन रूपा, यू शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड। हमने कहा, जो बन गए तो बन गए, नहीं बने तो नहीं बने, क्या करना है यार। लेकिन ठीक है, लेकिन गुरु महाराज बोलते थे यू शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड। मैंने कहा, यार बात को समझ में, रिजल्ट ओरिएंटेड का तो वो बात अभी भी खटक रही है मेरे मन में। इसलिए आज का जो ये सेशन है, इसका पूरा लाभ मैं उठाने वाला हूँ रिजल्ट ओरिएंटेड होने के लिए। तब तो लगेगा भैया वृंदावन आने का कोई लाभ हुआ, नहीं तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। तो सुनिए आप सब, कितने भक्त बैठे हैं यहाँ पर? 1000 होंगे, 2000 हैं, तो बहुत बढ़िया हो गया। जितने भक्तों की संख्या अधिक होगी उतना ही स्कोप है ग्रंथों के वितरण का। I'll just conclude with a pledge, they have to make. एक तो भगवत दर्शन पत्रिका गुरु महाराज के नाम से छपी थी, आप सब जो लेना चाहें ले सकते हैं, या नहीं है अवेलेबल अभी तो मंगवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आपको सुनकर थोड़ा सा लगेगा भाई ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन बोलना पड़ेगा गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए, प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए। तो आप सब मेरे साथ संकल्प लीजिए
लेंगे। गुरुवार बैठे हैं, अहमद सोचिए नहीं बैठे हो, गुरुवार बैठे हैं, वैष्णव बैठे हैं, महाराज लोग बैठे हैं, सन्यासी बैठे हैं, सब बैठे हैं। आप सब संकल्प लीजिए मेरे साथ, लेंगे कि नहीं? शपथ, शपथ, प्लेज, शपथ ले रहे हैं हम। आज गुरु महाराज के तिरुभाव दिवस के उपलक्ष्य में बोलिए, मैं ये शपथ लेता हूं, मैं ये शपथ लेता हूं, मैं ये शपथ लेता हूं कि एक भागवतम सेट मैं जरूर वितरित करूंगा। 2000 अगर भक्त हैं, 2000 सेट निकल गए। डबल कर दो, प्रभुपाद जी की पॉलिसी है डबल इट। अगर आप चाहे तो उसको डबल इट भी कर सकते हैं, तो 4000 हो गए। ठीक है, आप लीजिए, संकल्प ले चुके हैं, शपथ ले चुके हैं, गुरु महाराज के सामने, पीछे मत हटेगा, मैदान जंग में है, युद्ध छोड़ के मत जाइए। तो परम पूजनीय श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज श्रील भगवत पाद तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। Thank you, Hari Bol. Many said that being a guru in ISKCON is the most difficult service, but second most difficult is to be an MC. Maharaj Prabhu, and then His Holiness Bhakti Asrai Vaishnav Swami Maharaj. So, Hare Krishna. हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम, वंदन, नमन। आज परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी का तिरुभाव दिवस हम सब मना रहे हैं। मैं आपको अपने जीवन के एक संस्मरण सुनाऊंगा, क्योंकि आप बहुत वक्ता बोल चुके हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज से 35 साल पहले मैं महाराज श्री से मिला था। तो महाराज श्री ने मुझसे पूछा क्या करते हो। इस्कॉन मंदिर में मेरी मुलाकात हुई। मैं बेसिक ब्रजवासी हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। तो मैंने महाराज श्री से निवेदन किया कि मैं एडवोकेट हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप एडवोकेट हैं तो आप इस्कॉन से जुड़िए। तो 35 साल पहले उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से मैं इस्कॉन से जुड़ा, और अनवरत रूप से मैं जब इससे जुड़ा हुआ हूँ। ये महान कृपा उनकी मेरे ऊपर हुई। ऐसे महापुरुष कहीं जाते नहीं हैं, वो सदैव रहते हैं इस धरा पर, मार्गदर्शन करते हैं हम लोगों का, आप सब लोगों का। तो उनके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का केस लड़ रहा हूँ, जो डिस्प्यूट चल रहा है मथुरा वाला, एज एडवोकेट उसको मैं फाइट कर रहा हूँ। तो जब भी महाराज श्री मिलते, हाँ, वो केस चल रहा है कोर्ट में, तो उसे मैं ही लीड कर रहा हूँ। मैंने ही रिट की थी उस पर। तो प्रयास है कि भगवान कृष्ण का जैसे अयोध्या में मंदिर बन गया है, ऐसे मथुरा में भी बन जाए। तो जब भी महाराज श्री से मिलता तो मुझसे कहते महेंद्र प्रताप इधर आओ। तो मैं महाराज श्री से कहता हुक्म, आदेश करिए महाराज जी, केस में क्या चल रहा है, केस का बताओ मुझे। तो मैं महाराज श्री को केस के बारे में बताता है। तो कहते चिंता मत करना। उनके आज भी शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं, ऐसे लगता है कि वो मेरे पास ही खड़े होकर के मेरे कान में आज भी कह रहे हो। कहते हैं कि क्या चल रहा है उस केस में। तो मैं महाराज श्री को बताता, महाराज श्री ये चल रहा है उस केस में, और क्या चल रहा है। मैंने कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में केस चल रहा है। तो कहते चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो ऐसे महापुरुष, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। शूरमा वही जो जग में अपनी राह बनाता है, कुछ चलते हैं पद चिन्हों पर, खुद पद चिन्ह बनाते हैं। तो ऐसे महापुरुष, आज सौभाग्य से उनके इस कार्यक्रम में मुझे भी आने का अवसर मिला। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। और आप सबको भी बहुत बहुत नमन, वंदन, प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू। राधे राधे। Thank you, Maharaj Prabhu. Hare Krishna. So now, और ये अवसर मुझे आदरणीय हमारे जनार्दन प्रभु जी, श्री जनार्दन महाराज और पंचगोड़ा प्रभु की कृपा से मिला, तो उनको भी नमन। थैंक यू। Thank you. After His Holiness Vaishnav
Maharaj, Bhakti Asrai Vaishnava Swami Maharaj, will be showing a very short clip, a video that Guru Maharaj heard that when Sundar Gopal Prabhu, he recited this in person, Guru Chalisa. And there is so available. Everything now is running out of time. So, Hare Krishna. And then after that, would like to ask Nagapatni Mataji. You want to? Yes? Nagapatni Mataji. After that. Guru Maharaj says, in the initial stages, we may execute devotional service as a matter of duty. But if we sincerely do it as a matter of duty, that duty will culminate in love. Then we will want to lovingly serve Krishna. That's today's quote. This is simple. हरे कृष्ण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समय कम है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, केवल महाराज ने आदेश किए तो कुछ शब्द से बोलना चाहता हूँ। गुरु महाराज के लिए बोलना ज़रूरत नहीं, अब देखकर समझ सकते हैं। मैं ही देख रहा था सुबह कि 2005 में इसी समाधि एरिया में सबसे प्रथम समाधि हम नर्मदा महाराज को दिए, उसके बाद विभु चैतन्य प्रभु, एक एक करके समाधि हुआ। मुझे टेंशन होता था कि सभी लोग पूछते थे समाधि तो हुआ, कोई पूजा कोई आते नहीं, कोई देखते नहीं, ऐसे पढ़ा, कोई नहीं, मरुभूमि की तरह ऐसे रिजेक्टेड। गुरु महाराज जब थे तब उनका अनेक प्रकार की अच्छा गुण के अंदर एक गुण था, उनके गुरु भाई लोग को आए और कोई भक्त आए, उनको इतने बढ़िया से केयर करना चाहते थे, बहुत व्यस्त हो जाते थे, उनको क्या कि नहीं, रूम मिला कि नहीं, प्रसाद, बहुत उनके केयरिंग बहुत व्यस्त रहते थे। जब थे वो करके गए थे नहीं, अभी भी वो समाधि स्थल में जाने के बाद हम परम धाम को अभी भी कर रहे हैं समाधि। जब उन्होंने लिए समाधि का क्षेत्र ही बदल गया, काय पलट गया, उसका काया केवल पलट गया नहीं, नीचे क्लीन सब ऊपर नहीं हो गया। अभी जितने भी समाधिस्थ हैं उनके गुरु भाई, सबको प्रॉपर देखभाल पूजा हो रहा है। ये उन्होंने परम धाम जाने के बाद भी कर रहे हैं उनका क्रिया। अभी हमारे मोहन प्रभु बता रहे थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ये ऊर्जा गुरु महाराज से मिला उनको। और प्रभुपाद जी का सूत्र था डबल इट, उनको करते थे। मैराथन के समय में गुरु महाराज भागते थे इधर उधर इधर उधर, सबको इनकरेज करने के लिए। अब वो जो इनकरेजमेंट का ऊर्जा थोड़ा बहुत मोहन प्रभु के अंदर है, तो आज के इस द्वितीय स्मरण उत्सव का फ़ायदा उठाकर ये संकल्प करा लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये गुरु महाराज अभी हैं अपने प्रभुपाद जी के पास, अपने धाम में हैं, अपने लोक में से भारत, वहाँ रहकर भी उनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा काम करा रहे हैं, अभी भी काम करा रहे हैं। कि ऐसा नहीं सोचे कि नहीं है, वो अवश्य हैं। अब यही है सूत्र कि फिजिकल रूप में नहीं है, वाणी रूप में तो हैं, उनके आदेश और उपदेश के रूप में हैं। वो अपने जीवन काल में प्रभुपाद जी के प्रति जिस प्रकार समर्पित थे, जिस प्रकार निष्ठा था, तो उस तो अनपरालाल है, उसका कोई तुलना ही नहीं। अभी वो गए, अभी हम उनके कहलाने के लिए सब हैं इधर। कम से कम हमको इतने अपने को संभाल कर रखना चाहिए कि वो जैसे थे इतने तो नहीं बन पाएंगे, कम से कम उनका बदनाम ना हो कि हम आप उनके शिष्य हो क्या।
तो इसलिए कुछ ऐसा हमको सुधारना चाहिए, कुछ ऐसे व्यवहार ऐसा करना चाहिए, तो कम से कम जो पुत्र के शिष्य के दायित्व है कि उनको नाम को और रोशन किया जाए, कुछ करे, तब हमारा एक दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। प्रभुपाद कहते थे कि मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह है, यू जो स्पीक इज नॉट इज यूजलेस, यू शुड शो इट इन एक्शन। आप करके दिखाओ। पूछा गया क्या करके दिखाऊं आपको प्रेम को, एक्शन में कैसे दिखाए? बोले मैं जाने के बाद में आपस में आप कैसे मिलजुल के रहते हैं, बुझामण में रहते हैं, दिस इज विल शो लव टुवर्ड्स मी। और इसी प्रकार गुरु महाराज जिस प्रकार उनके भाव था, सेवा भाव था, गुरु निष्ठ थे, प्रभुपाद निष्ठ थे, तो इसको कुछ इस प्रकार से गुरु महाराज के अभी शारीरिक अनुपस्थिति में है, हम लोग इस प्रकार से व्यवहार और ऐसे मिल करके इस प्रकार करें ताकि पूरे दुनिया में सारे संसार सबको पता चलेगा कि नहीं वो अभी भी हैं, उनके उपदेश में उनके जो शिष्यगण हैं, उनके अनुयायी गण हैं, वो कैसे किस प्रकार झलक उनसे भी दिखता है। हरे कृष्ण। परम प्रिय श्री गोपाल कृष्ण गुरु महाराज की, आप समस्त भक्त वृंद की निताय गौर हरि प्रेमानंद। Hare Krishna, is the video ready? Or get the books first? Where is Sundar Gopal Prabhu? Come. प्रकट भये सौभाग्य निधि, करुणा सिंधु महेप, धर्म धुरंधर ज्ञान निधि, गौड़िया वंश प्रदीप। मैंने गुरुदेव चालीसा लिखा था, तो गुरु महाराज ने इसको सुना था और सुनने के बाद उनको बहुत पसंद आया, तो गुरु महाराज ने आदेश दिया कि इसको इंग्लिश और हिंदी में अर्थ के सहित ट्रांसलेट करके पब्लिश करने के लिए कहा था। तो इसलिए आज के दिन हम लोग इसको पब्लिश कर रहे हैं। तो इसको आप सब ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और गुरु महाराज बहुत प्रसन्न होंगे। इसमें गुरु महाराज के दिव्य गुणों का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन है और हर चौपाई में महाराज के एक विशेष गुण का वर्णन किया गया है। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग किताब नहीं पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू। Thank you. Hare Krishna. So now प्रकट भये सौभाग्य निधि, करुणा सिंधु महेप, धर्म धुरंधर ज्ञान निधि, गौड़िया वंश प्रदीप। दिल्ली नगर सौभाग्य त्योहारो, भक्त शिरोमणि प्रकट जहारो, सन 44 प्रकट भये सौभाग्य निधि, करुणा
परमाधुरंदर ज्ञान निधि गौड़िया वंश प्रदीप। दिल्ली नगर सौभाग्य त्योहारो भक्त शिरोमणि प्रकट जहारो। सन 44 सतनवदश सर तिथि अन्नदा भक्ति प्रद सुंदर। दिल्लेन्द्र प्रस्तयति पावन प्रकट भये सबके मन भावन। जय गुरुदेव दया के सागर भक्त प्रवर सब गुण गण आगर। जय गुरुदेव जय जय चरण कमल गुरुदेव तुम्हारे। भव भयो भंजन कष्ट निवारे। वंदो श्री गुरुदेव चरण रज महिमा कहत सुनत जग अचरज। दिव्य दृष्टि गुरुदेव तुम्हारे। पावन पतित अधम जन तारे। हस्त कमल गुरुदेव तुम्हारे। बरस सकल सौभाग्य पधारे। जय गुरुदेव जय जय दिव्य वाक्य मुख कमल तुम्हारे। Much. He's touched the heart of each and every one of you, and it has enlivened you to surrender your lives to Krishna. And this is how Srila Prabhupada's movement will go on. One of the treasures I found was his early letters to Srila Prabhupada. And in them he asked questions. But Prabhupada also identified in him his very elevated Vaishnava mentality and his deep understanding of how devotees are to be treated. And I can testify it wasn't just his god brothers he was merciful to. It was everybody, including his god sisters. So in this beautiful celebration, I think maybe next year we have to expand the Krishna Hall if it keeps going like this. So I thank you for inviting me, and I truly want to honor and glorify His Holiness Srila Gopal Krishna Maharaj ki jai. Hare Krishna. Thank you. Would like to request Mahamantra, Prabhu, to please come. And then Bhakti Prem Swami Maharaj, His Holiness Bhakti Prem Swami, after Mahamantra, Prabhu.
And then Sakshi Gopal Prabhu after His Holiness. Bolo, bolo. Guru Maharaj says, by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the austerities in this age of Kali have got so simplified. Just chant and eat as much prasad as you want, but eat Krishna prasad. Chant, dance, and feast. This is from our Guru Maharaj, Waves of Wisdom. Hare Krishna. Thank you, Maharaj, for giving me a chance. Janardhan Maharaj is a very special secretary of Maharaj, Guru. नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम य प्रकाश्य विधिर्य च प्रचारम कृतवान साधु भगवत पादाय तेन। स्पीक इन हिंदी, इन इंग्लिश? हिंदी वाला। हम पहली बार बम्बई में, वैसे तो इस्कॉन का परिचय हमें इलाहाबाद में हुआ था, प्रयागराज में 1977 में, जब प्रभुपाद जी वहाँ आए थे। लेकिन दुर्भाग्य था कि प्रभुपाद जी केवल 4 दिन रुके और उनकी कीर्तन पार्टी देख करके एक अंग्रेज हमारे उन भक्त जो उनके थे दोस्त बन गए, कमलानंद दास। उन्होंने ये मैगजीन दिया मुझे, बैक टू गॉड हेड। और बाद में हम वकालत की प्रैक्टिस करने के लिए बम्बई चले गए। बम्बई में हम जुहू बीच पर घूमने आए। घूमते 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 जब मंदिर के सामने आए तो वैसे ही 3-4 ब्रह्मचारी वहाँ घूम रहे थे, नहा रहे थे एक्चुअली। तो हमने सोचा, अरे भैया यहाँ कहाँ ठग विद्या करने आ गए। उनको देखकर हमने ऐसे ही उनको बोल दिया। तो बड़े विनम्रता से बोले, अरे आप देखे नहीं हो इस्कॉन मंदिर? जब इस्कॉन शब्द कहा तो हमने कहा, अरे कहाँ है? ले आए मंदिर में। मंदिर में हम दर्शन किए तो जो ही लॉबी में बैठे, 83 की बात बता रहा हूँ आपको, महाराज गुरु बने थे 82 में। तो मैंने देखा कि कुछ लोगों को कुछ भक्त बुला रहे हैं, ले जा रहे हैं ऊपर। तो मुझे लगा कोई ना कोई बड़ा आदमी यहाँ आया हुआ है, उन्हीं के चक्कर में ये लोग ले जा रहे हैं। हम भी पीछे पीछे लग गए, चले गए महाराज के रूम में। वहाँ सब बैठे थे लाइन से, हम जाके पीछे बैठ गए। सबसे कुछ बात करते थे, उनका प्रश्न पूछते थे, फिर उन्हें बोल देते थे ठीक है, वो चले जाते थे। मैं एकदम पीछे, अगर आप बम्बई गए हैं देखें ना, उनका जो रूम है उसका हिस्सा कुछ बाहर निकला रहता है। पहले वो 106 में बैठते थे, जहाँ अभी ब्रजहरि प्रभु बैठते हैं। तो बाहरी वाले हिस्से में हम बैठे थे। जब हमारा नंबर आया तो सबसे तो इंग्लिश में बात कर रहे थे, मुझसे हिंदी में बोले। बोले आपका क्या नाम है? हमने कहा कमला शंकर दुबे। ओ पंडित जी। क्या करते हो? हमने कहा मैं फिलॉसफी से एमए कर रहा हूँ और वकालत की प्रैक्टिस करता हूँ। कहा फिलॉसफी से? ये देख रहे हो पुस्तक प्रभुपाद जी की? अरे तुम तो पंडित हो भैया, कृष्णा की सर्विस। कृष्णा सर्विस, कृष्ण की सेवा करो। तो मैंने जाकर अपनी डायरी में लिखा ये बात, उनका स्टेटमेंट। बहुत सीरियस हो गए कि अरे भाई ये संस्था तो बड़ा गंभीर लग रही है बहुत। लेकिन थोड़ा थोड़ा लोग जब बात किया वहाँ जुहू में, तो बोले अरे भाई तू कहाँ चक्कर में पड़ रहा है, सब CIA एजेंट हैं, चोर चंटी लोग हैं। तो हमने कहा अगर ऐसी बात है तब तो ज़रूर जाएंगे, देखें गंभीरता से क्या हो रहा है अंदर भाई। तो हम फिर आए दोबारा, तो श्रीधर महाराज मिल गए, श्रीधर स्वामी। उन्होंने हमारा परिचय करा दिया। एक वहाँ और वकील थे दूसरे, महाप्रभु दास, सो कीर्तनानंद स्वामी के वो शिष्य थे। तो शिल भक्तिपात जब देखो तब एक ही नारा लगा रहता था। तो उस ज़माने में गुरु का स्टैंडर्ड बहुत हाई था इस्कॉन में। तो एक तरफ व्यासासन में गुरु महाराज का रहता था छवि,
और दूसरी तरफ कीर्तनानंद स्वामी का। तो मुझे लगा यार ऐसा तो नहीं कि एक हिंदुस्तानी का फोटो लगा दिया है, बाकी सब 420 सब CIA एजेंट ही है, क्या चक्कर क्या है। मैं और ज़्यादा थोड़ा गंभीर हो गया ISKCON की समस्या को समझने के लिए। तो फिर पूरा 1 साल चक्कर लगाते रहे, लेकिन ग्रुप दूसरा हो गया। तो जब ग्रुप बाजी हो जाती है तो बोलेगा हमारे गुरु के पास चलो, उनके पास तो जाना नहीं। तो मतलब 1 साल मैं रेगुलर जाता था जुहू में, क्योंकि कभी किसी ने नहीं कहा कि महाराज आए हुए हैं। जब देखो तब कीर्तनानंद स्वामी, उन्हीं के बारे में बात। 84 में दोबारा ठीक उसी जगह जहाँ हम लॉबी में बैठे थे, महाराज वापस आ गए। मद्रास गए हुए थे, वापस आए, उन्होंने देखते ही पहचान लिया, ओह मिस्टर दुबे। हमने कहा अरे ही रिमेंबर्स आफ्टर 1 year, ही इज सेइंग सेम नेम, यू आर डूइंग फिलॉसफी, वकालत। हम कहा यस यस महाराज। फिर वो बोले अगर आप 15 मिनट के बाद मिलो तो आई विल सी यू। जब गए उनके रूम में तो फिर वो पूछे कि आप क्या हुआ आपको, 1 साल से आए ही नहीं। अरे हमने कहा महाराज मैं तो आपका लीगल एडवाइज़र हूँ, मैं तो बहुत रेगुलर आता हूँ, कीर्तनानंद स्वामी हमको जानते हैं, पूरा दुनियादारी उनको बताने लगे। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, तो आते हो रेगुलर आप। तो बोले आप क्यों नहीं सीरियस क्यों नहीं हो जाते। हमने कहा मुझे महाराज 4 प्रश्न है, अगर आप जवाब दे तो हम सीरियस हो जाएंगे। बोले क्या है बताओ। हमने कहा आप CIA एजेंट हो कि नहीं हो। महाराज हंसने लगे, जोर से हंसने लगे। बोले तू क्या सोच रहे हो, हमको कुत्ता काटा हुआ है। अरे भाई हम बाहर गए थे पढ़ने लिखने, ये सब छोड़ छाड़ के इसमें लग जाएंगे। नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। तो हमने कहा फिर आप तो बड़े बड़े शहरों में बैठे हो, बम्बई में बैठे हो, कलकत्ता में, क्यों नहीं छोटी जगहों में क्यों नहीं मंदिर बनाते। कहे भाई इंडिया में तुम्हारे जैसे सब बात करते हैं, तुम जाओ शुरू करो, जहाँ भी शुरू करो हम तुम्हें मदद करेंगे, जाओ। फिर महाराज ने कहा कि डोंट टेक दिस, डोंट बाय दिस स्टफ, looks like your mind is polluted with so many informations, misinformation. So फिर उन्होंने हमको कहा कि 2 दिन के बाद हमारे साथ चलो तुम पूना। हमें महाराज साथ में पूना ले गए। फिर बोले नहीं हम वृंदावन चल रहे हैं, वृंदावन आओ। तो राजधानी से हम वृंदावन आए और महाराज के साथ कृष्ण बलराम मंदिर में 1 हफ्ते के लिए रुके। तो हमने ये देखा कि महाराज हर हाल में ये चाहते थे कि मैं हरे रामा हरे कृष्णा ISKCON फुल टाइम ज्वाइन कर लूँ, लेकिन बोल नहीं रहे थे अपने मुंह से, ये नहीं कर रहे थे कि नहीं तुम पूरा फुल टाइम डिवोटी बन जाओ। फिर हमने एक बात देखा उनके अंदर कि इतना विनम्रता से, आप ठीक है ना, आपको कोई कष्ट तो नहीं है, अच्छा है लोग देखभाल कर रहे हैं, रूम अच्छा मिल गया है। मतलब उनका जो हृदय था और उनका जो व्यवहार था वो इतना आकर्षक था, मुझे लगा अगर ये CIA एजेंट भी हैं तो इन्हीं की सेवा करने से हमको फ़ायदा है। दृढ़ हो गया। आई डिसाइडेड इवन इफ मतलब आई गॉट कम्प्लीटली सोल्ड आउट टू हिम राइट हियर इन वृंदावन। तब ने कहा महाराज मैं अपना बाल निकलवा दूँ क्या, तो मुस्कुराने लगे। बलराम जयंती थी, 84 की बलराम जयंती, और कृष्ण जन्माष्टमी आई महाराज की उसी साल 84 की व्यास पूजा में उन्होंने दीक्षा दिया। जब हमारा नाम दिया महामंत्र तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ ए वेरी वैल्यूबल नेम। तो करीब 15-20 मिनट तक उन्होंने प्रवचन दिया और सबको समझाया कि लड़का पढ़ा लिखा है, ये है वो है बहुत। तो हमें लगता है कि हम गुरु महाराज की सेवा में, क्योंकि सबसे कठिन काम था राधा पारसारथी के मंदिर का उद्घाटन और उनका यहाँ पर स्थापन करना। तो उन्होंने, मैं भाग्यवान हूँ कि उन्होंने अपने इस सेवा के लिए मुझे भी एक निमित्त बनाया और इतने गॉड ब्रदर गॉड सिस्टर दिए, इतना बड़ा साम्राज्य दिया ISKCON का, जो सब लोगों की सेवा का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद जनार्दन महाराज को। मैं भी सोच रहा था कि भाई हम भी तो पुराने आदमी, हमारी तरफ देखते नहीं महाराज, आज देख ही लिया। फाइनली स्वामी। Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna. Thank you. All glory to Maharaj, all glory to Guru Maharaj. Hari Bol. Mantra, Prabhu ki. Would like to request His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj, then Sakshi Gopal Prabhu. I just want to read you. See, in the books,
2 books, 2 volumes that we published. This is the first, I think, in ISKCON, that the concept of what Prabhupada said and what Guru Maharaj said, and also what I gave in the lectures, they're all aligned together. So the purpose of initiation, Guru Maharaj says, just initiation is not enough. Chant attentively to please Guru and Parampara. If one does not chant attentively, what is the use of initiation? So, which is the most important? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी ते नाम श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की I'll mention only one incident. How much ideal Guru Maharaj was. 2070 GBC meeting was in Ujjain. I went to receive him in airport with one Jaguar car. So when he came in front of the car, he said, "This temple car?" I said, "No, Guru Maharaj, no, I will not go. Bring temple car." I have requested Guru Maharaj, actually, there's so many sannyasis are coming, we don't have so many cars. We request our devotees, it is not only for you, this car is using for other sannyasis also. He said, "Nothing should be special for me." Then we requested him, then he get into the car, and when he entered into the room, we put one altar, Singhasan, because we are making altars. He said, "Why altar here?" So, "Maharaj, you have so many deities, that is why I put." Every room has altar? If there is no other note, I don't know. I need only one table. I told Maharaj, "You know that we are making altars, we have factories, there is no space to keep, we are just keeping different rooms like this." So this type of ideal nature, as a sannyasi, guru, leader, he never demand anything. Last one I want to mention, people may think for the spiritual personality, management is very difficult. 2 things is difficult. Guru, spiritual personality management, but he showed that a pure devotee can do anything. He was the bureau chairman from the very beginning up to the end. Last more than 50 years he was GBC chairman, bureau chairman. There nothing in the history never will come that in 50 years how many bureau chairman will change, nobody knows. But he was more than 50 years bureau chairman. So he proved that a spiritual personality can do anything and everything. He was a pure devotee, that is a Prabhupada has never changed his name also. He was before name Gopal Krishna, after initiation Gopal Krishna. After sannyas also he is Gopal Krishna. Srila Prabhupada ki, Gopal Krishna Goswami Guru Maharaj ki, Gaur Bhavanand. Thank you, Maharaj. Sakshi Gopal Prabhu. And then it will be followed by Radhika Kripa Madaji. Everything now is really going fast. Go ahead. Huh? Two minutes now, please. I would like to call as many in 15 minutes. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामने प्रभुपादस्य साहित्यमय प्रकाश्च वितीर्च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। 1983 में पहली बार
गुरु महाराज जी का दर्शन मिला चंडीगढ़ में। उस समय हिज होलीनेस नुकुंदर महाराज जी वहाँ पर प्रेसिडेंट थे, मैं टेम्पल कमांडर था। तो महाराज ने बोले ISKCON के गुरु आने वाले हैं। उस समय कुटिया होती थी, कुटिया अभी भी है, छोटा मंदिर, जैसे श्री राम जी बता रहे थे, उस समय मैं टेम्पल कमांडर था उस समय वहाँ। तो महाराज बोले ISKCON गुरु आने वाले हैं, जरा इसको सफाई कर दो, क्या नाम है, कुटिया को। मैंने फिर लगभग पूरा एक दिन लगा के पूरी कुटिया को साफ़ किया। उसमें फिर क्या नाम है, झाला लगाए, कुछ फूल लेके आया वो लगाए। तो जब महाराज आए तो महाराज बोले ये कुटिया किसने सजाई है? तो नुकुंदर महाराज जी बोले ये क्या नाम है, पंडित जी हैं सुभाष चंद्र, इसने उसको सजाया है। तो वेरी नाइस, रियली हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी, महाराज बोले। फिर महाराज क्लास देने के लिए चले गए। तो मैं तो बिजी था, संडे फेस्टिवल था, प्रसाद बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं थी चंडीगढ़ से मैं। तो महाराज बोलते हैं उसको बुलाओ, सुभाष चंद्र शर्मा को बुलाओ, यहाँ मेरी क्लास में आके बैठेगा। मैंने बोला महाराज जी मुझे थोड़ा काम करना है। कहते नहीं काम बाद में करना है, यहाँ बैठ जाओ। तो क्लास हुआ। क्लास के बाद महाराज बोले अगले दिन मेरे को कि थोड़ा फ़ोन करो लोगों को, मुझे मिलने जाना है। तो मैं फ़ोन किए। बाद में मूसलाधार बरसात शुरू हो गई। महाराज ने लंच लिया लगभग 2 बजे, और 2 बजे के बाद बोले चलो चलते हैं। मगर महाराज जी इतनी तेज़ बरसात हो रही है, कहाँ जाएंगे, अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो महाराज मेरे को कुटिया से बैठ के बोलते देखो ये रोड देखो, इस पे कितने रिक्शा वाले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, साइकिल पे लोग जा रहे हैं, गाड़ियाँ तो उस समय कम होती थी। तो जब ये जा सकते तो क्यों हम क्यों नहीं जा सकते, अभी चलो। और उसी समय महाराज मुझे अपने साथ लेकर के हम एक लाइफ घर में ले गए। वहाँ पर जाके महाराज ने प्रचार किया हरे कृष्णा। तो मेरे को लगा भाई इनमें तो प्रचार का बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। ऐसा उत्साह तो मैंने कभी देखा नहीं किसी के अंदर। और उसके बाद अब कितनी बातें हैं, 45 साल की, 2 मिनट में क्या क्या बताएंगे। अब आपको ये बता देता कि हमें महाराज ने कैसे अपने चंडीगढ़ से कुश्तरा भेजा 2 मिनट के अंदर। हम महाराज की व्यास पूजा मनाने के लिए बम्बे गए 1991 में, 1991 में। तो महाराज व्यास पूजा के बाद जैसे ही प्रसाद लेने लगे व्यास पूजा के बाद, तो मुझे बुला लिया और बुला के बोलते हैं आपसे मैंने बहुत जरूरी बात करनी है। मैं बोला महाराज जी क्या बात करनी है? कहते अब आप चंडीगढ़ छोड़ के कुरुक्षेत्र चले जाओ। महाराज जी वो किस लिए? कहते वहाँ पर प्रभुपाद जी का मिशन पूरा करना है। प्रभुपाद जी चाहते थे वहाँ पर एक बहुत बड़ा कृष्ण अर्जुन का मंदिर बने, और हमारे ISKCON की अथॉरिटी ने बहुत लोगों को भेजा वहाँ, सब फेल हो गए, कोई कामयाब नहीं हुआ। तो अभी तुम हरियाणा से हो, हिंदी बोलते हो, तो आप चले जाइएगा। मैं बोला महाराज जी ठीक है, आप वहाँ प्रेजेंट किसी को बना दीजिएगा, मैं किसी को क्या नाम है उसको पूरी हेल्प कर दूँगा। मैं उस समय 12 था, मैंने रिश्ते था चंडीगढ़ में। महाराज बोले अच्छा तुम प्रेजेंट बनने के लिए मना कर रहे हो, तुम्हारी उम्र में तो मुझे प्रभुपाद जी ने GBC बना दिया था हैं? और अगर तुम जैसे भक्त इस संस्था को अपने हाथ में नहीं लोगे तो हमारे जाने के बाद इस संस्था को कौन चलाएगा? मैं तुमसे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता, जाओ और जा कर के कुरुक्षेत्र में प्रभुपाद जी का मिशन पूरा चालू करो। बोले हरे कृष्णा। तो हमने गुरु महाराज के आशीर्वाद से प्रयास किया, और फिर मंदिर पहले जगह मिला, फिर नया पुराना मंदिर बना, नया बना, 18 साल कोर्ट कचहरियों में चक्कर खाया। और उसके बाद फिर 2014 में हमें नई लैंड मिला। तो गुरु महाराज ने सुबह से लेकर के शाम की 5 बजे तक जाप किया था। जब उसकी डीड्स हो रही थी सुबह कितने बजे से 5 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे डीड हुई थी, तब तक महाराज ने कुछ खाया नहीं था, पिया नहीं था, कुछ नहीं किया था, केवल जाप करते रहे थे। और जब मैंने शयन कर दिया फिर महाराज उस लैंड पे प्रणाम करने गए, फिर स्नान किया, फिर प्रसाद पाया। और महाराज की कृपा से मंदिर बनना शुरू हुआ और अच्छा मंदिर बना। जब महाराज जाने वाले थे, महाराज मतलब 3 महीने पहले मैं महाराज से मिला। महाराज जी अब आपका क्या आदेश है, क्या करना है? साक्षी डोंट वरी, आई एम थिंकिंग कुरुक्षेत्र प्रोजेक्ट 24 आवर्स। अब आप चिंता छोड़ दो, मंदिर बन जाएगा।
अब कहते हैं अब तुम सुंदर मंदिर बनाओ, पहले वो जल्दी करो, अब कहते हैं अब सुंदर मंदिर बनाओ। और ये मैं गुरु महाराज के आज तिरुभाव दिवस पे ये सबके सामने बता रहा हूँ कि जो स्पीड हमारी पहले 7-6 साल में थी, उससे 3 गुना स्पीड से मंदिर बन रहा है। और आप आज के दिन गुरु महाराज के चरणों में, सभी वैष्णव के चरणों में ये भीख मांग रहा हूँ कि महाराज, गुरु महाराज, जैसे आपने मायापुर के भक्तों को आशीर्वाद दिया था कि नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाओगे, ऐसे हमें आज आशीर्वाद दीजिएगा कि अगले साल 2027 में चला प्रभुपाद जी का प्रिय ड्रीम प्रोजेक्ट और आपका एंडेवर सफल हो जाए और ये मंदिर की अगले साल ओपनिंग हो जाए। यही भीख आपके चरणों में मांगने के लिए मैं यहाँ पर प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सब वैष्णव को भी यही भीख मांगता हूँ कि आप कृपया हमें आशीर्वाद दीजिएगा, जिससे कि अगले साल हम गुरु महाराज जी का जो एंडेवर है और प्रभुपाद जी का जो सपना है उसको पूरा कर सके। हरे कृष्ण, बोलो हरे कृष्णा। धन्यवाद। I guess my request doesn't work, isn't it? 2 minutes. I'm sorry, I'm not be able to call what I'm trying to do, but please come at 4:30. Come back and we'll have another session. Who wants to come back for the second session? Mataji, you don't want to come back? Okay, we have 10 minutes more, but I think I will ask the last devotee after Mataji. Okay? And I would like to request and would like to have all of us an opportunity to hear from our new sannyasi god brother, His Holiness Bhaktivedanta Rukmini Krishna Goswami Maharaj. So you have... Yes, Maharaj. All glories to Guru Maharaj, all glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj ने मैं जुड़ी थी 99 में और उसके बाद गुरु महाराज ने मुझे पहली सेवा दी कि मुझे लेक्चर्स देने हैं। जैसे ही मुझे मिले उसके कुछ दिन बाद ही said you have to give lectures. So I said I'm not perfect, I was not initiated at that time. पर कहते हैं you'll become perfect. पर धीरे धीरे जैसे जैसे इनिशिएशन हो गई सेवा बढ़ाते चले गए। मुझे कहते हैं you have to write articles, you should write articles. फिर मैं गुरबाणी में से I must seek myself. तो मैं गुरबाणी से कुछ भी कोट करती थी। जब गुरु महाराज श्लोक बोलते थे तो मैं गुरबाणी कोट कर देती थी। मुझे कहते हैं राइट अ बुक ऑन दिस, तो आई वॉज नॉट राइटिंग, हेजिटेटिंग। पर फिर धीरे धीरे 2007 में वो एक स्टोरी अलग से है, समय नहीं है, आई हैड टू राइट। मैंने वो बुक लिखी, उनको प्रेजेंट की 2007 में। उससे पहले ही 2003 में मुझे कहते हैं कि मैं जब लेक्चर्स दे रही थी दिल्ली में तो मुझे कहते हैं नहीं, तुम्हें अब इंटरनेशनल प्रीचर बनना है, तुम्हें पूरे वर्ल्ड ओवर जाना है, तुम्हें मेरी blessings हैं to travel anywhere on this planet. He sent me an email from America telling me this. And then I said, yes, I have to fulfill his wish, his desire. तो मैंने 2007 में मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रीचिंग के लिए जा रही थी, तो मैं उनके कमरे में गई उनसे आशीर्वाद लेने। तो वो पाकिस्तान के डिवोटी से बात कर रहे थे कोयटा शहर में। तो मैं उन डिवोटीज़ को मिली थी, मैंने और प्रभु जी ने, रासे प्रिय प्रभु ने थोड़ी सी सेवा की थी उन डिवोटीज़ के लिए, क्योंकि कोयटा में डेटीज़ चाहिए थे। तो गुरु महाराज ने वो सेवा हम दोनों को दी कि जयपुर से जाके डेटीज़ लाओ जो पाकिस्तान जाएंगे। तो हम दोनों ने वो सेवा की और वो डेटीज़ लेकर आए। तो तब मैं 2007 में वो डेटीज़ पहुंच गए थे पाकिस्तान, पर उनकी अभी तक इंस्टॉलेशन नहीं हुआ था। देन गुरु महाराज सेड ही वाज टॉकिंग टू द डिवोटीज़ ऑन द फोन एट दैट टाइम। तो एकदम उन्होंने वो गुरु महाराज को बुला रहे थे, क्योंकि 2006 में गुरु महाराज पाकिस्तान गए थे एंड वी वर द फॉर्चुनेट सोल्स हु ड्रॉप्ड इन टू द एयरपोर्ट। तो उस समय 2007 में मैं जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया, तो गुरु महाराज पाकिस्तान के डिवोटी से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं महाराज जून के महीने में इंस्टॉलेशन है, और ये मई का महीना था। मैं मई में ऑस्ट्रेलिया सिडनी जा रही थी। सो गुरु महाराज उनसे बात करते करते एकदम कहते हैं, वो बार बार इंसिस्ट कर रहे थे महाराज आप आइए, 6 जून को इंस्टॉलेशन है, आप आइए। तो गुरु महाराज एकदम फ़ोन पर ही कहते हैं इट्स ओके इफ़ आई सेंड राधिका कृपा। तो उन्होंने कहा येस महाराज शी कैन कम इफ़ यू सेंड हर।
तो गुरु महाराज उसी टाइम प्रभु जी को कहते हैं, रासाप्रिया, डू यू माइंड इफ आई सेंड हर टू पाकिस्तान? तो प्रभु जी ने कहा, यू कैन सेंड हर एनीवेयर, वेयरएवर यू वांट। सो गुरु महाराज ने कहा, ओके। कोई बात ही नहीं हुई। मैं उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट ली और मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई। गुरु महाराज अमेरिका चले गए और मेरे से बात करते रहे फ़ोन पर। आई वॉज रिपोर्टिंग टू हिम, बट कोई बात नहीं हुई पाकिस्तान की। मैं वापस लौटी तो मुझे प्रभु जी ने कहा कि पाकिस्तान के डिवोटीज़ तुम्हें बार बार बुला रहे हैं, दे आर इन्वाइटिंग यू, क्योंकि गुरु महाराज उनको बोल गए हैं कि तुम आओगी। तो मैंने कहा, ऐसा वीज़ा तो मिलता नहीं पाकिस्तान का कि यू जस्ट वॉक इन एंड यू गेट अ टूरिस्ट वीज़ा फॉर पाकिस्तान। सो आई सेड, क्या किया जाए, कैसे इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए कि वीज़ा कैसे मिलेगा? तो क्योंकि अभी महामंत्र प्रभु बता रहे थे CIA एजेंट्स का, तो आई देन रियलाइज, क्योंकि हमने गुरु महाराज की बहुत एसोसिएशन पाई है। हम गुरु महाराज के रूम में अक्सर 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठे रहते थे और गुरु महाराज जानते थे हमें कोई काम नहीं है, बट बैठे रहेंगे, सिर्फ गुरु महाराज को सुनते रहेंगे। तो गुरु महाराज ने उसी समय, अब मुझे ध्यान आया कि महामंत्र प्रभु एक बार गुरु महाराज के रूम में बैठे थे और हम भी बैठे थे। इन्होंने रिपोर्ट किया गुरु महाराज को कि राम जेठमलानी के घर में डिनर हुआ है और उस डिनर में इनको पाकिस्तान का हाई कमिश्नर मिला और हाई कमिश्नर ने नंबर एक्सचेंज किया इनके साथ उस पार्टी में 2007 में 2007। तो उस पार्टी में इन्होंने उससे नंबर एक्सचेंज किया और उसे मंदिर में इनवाइट किया है। तो मेरे को याद आ गया कि इनके पास नंबर है हाई कमिश्नर का। तो मैंने प्रभु जी से कहा, लेट्स गो टू द टेम्पल। हम लोग मंदिर आए और मैं पासपोर्ट अपना बैग में रख कर लेकर आई और आकर मैं सीधा प्रभु जी के ऑफिस में गई और प्रभु जी को बोला, आपके पास ऐसे ऐसे आपने गुरु महाराज को बताया था कि राम जेठमलानी को वहाँ पर आप मिले हैं। तो प्रभु जी ने कहा, हाँ मैं मिला था, पर अब नंबर खो गया है। तो हमने फिर नंबर ढूंढा, तब गूगल नहीं था, कुछ नहीं था। तो फिर हमने हेल्प ली कृष्णांगी माता जी के हस्बैंड, वो एक्सटर्नल अफेयर्स में काम करते थे। उन्होंने मुझे उसी समय नंबर दे दिया पाकिस्तान हाई कमिश्नर का। मैंने प्रभु जी को कहा, बैठिए और फ़ोन लगाइए। प्रभु जी ने फ़ोन लगाया, लैंडलाइन, उनके PA ने उठाया हाई कमिश्नर के। प्रभु जी ने कहा उसे कि मैं आपसे मिला था, हाई कमिश्नर से मिला था, आपको इनवाइट किया। उन्होंने कहा, हाँ जी हमें अच्छे से याद है। उन्होंने कहा, फिर कब आएंगे आप ISKCON मंदिर? उन्होंने कहा, हम जल्दी प्रोग्राम बनाएंगे। फिर प्रभु जी ने एकदम कहा कि मेरी एक गुरु बहन है जिसको पाकिस्तान जाना है, एक प्रोग्राम है, एक फंक्शन में जाना है उसको, उसके कोई कज़न्स रहते हैं, उनका फंक्शन है। तो उन्होंने कहा, कब जाना है, कब है फंक्शन? प्रभु जी ने कहा, कल है फंक्शन। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का वीज़ा इतनी जल्दी नहीं हम देते, कम से कम 1 महीना इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी इंडियन को देने से पहले। उन्होंने जैसे ही ये शब्द बोले, नेक्स्ट प्रभु जी ने बोला, वो टेररिस्ट नहीं है, और वो PA हंसने लग पड़ा। तो फिर उसने कहा, ठीक है आप उनको भेज दीजिए, हम उनसे मिल लेते हैं। प्रभु जी ने, मैंने इनको कहा कि आप बोलिए कि मैं जनरल लाइन से नहीं आऊँगी, क्योंकि जनरल लाइन वहाँ पर 1-1 किलोमीटर की होती है। प्रभु जी ने कहा कि वो जनरल लाइन से नहीं आएगी। तो कहते हैं, नहीं नहीं, हम उन्हें VIP गेट नंबर इससे भेजिए, मेरा व्यक्ति जो होगा पर्सनल वो रिसीव करेगा उनको और अंदर लेकर आएगा। तो मैं उसी समय पाकिस्तान एम्बेसी पहुंची और प्रभु जी ने जैसे कहा था, दोपहर के उस समय कोई 1 या 1:30 बजा था, कुछ ऐसे ही था। हम लोग पहुंचे, मैं गाड़ी से उतरी और सीधा उस गेट से अंदर गई और PA ने मेरा पासपोर्ट लिया और सीधा हाई कमिश्नर के पास ले गया। हाई कमिश्नर ने मेरा पासपोर्ट चेक किया, उसमें बहुत कंट्रीज़ के वीज़ाज़ लगे हुए थे ऑलरेडी, और उसने देखा और उसको ठीक लगा। उसने उसी समय कहा, जी इनसे पूछो इनको कहाँ कहाँ जाना है और ठप्पा लगा दो। एंड देन इट वाज कि आई वेंट टू क्वेटा बलूचिस्तान एंड देन आई वेंट टू लाहौर, करावलपिटी, और शाम की फ़्लाइट से 6 बजे की फ़्लाइट से आई वॉज इन लाहौर, आई वॉज इन पाकिस्तान। जय पाकिस्तान की जय। So this is how Guru Maharaj can get the work done. And then Guru Maharaj called me up and he said, when he came to know I got the visa and I'm boarding the flight and going. So Guru Maharaj called me up and he said, it's very nice Radhika Kripa, you're going, but be very careful, you can be shot without notice there. So I said, okay Guru Maharaj, I know your blessings are always there. So Guru Maharaj की हमेशा blessings रही हैं और एम्पावर भी गुरु महाराज जी करते हैं। बहुत कुछ है कहने के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स, गुरु महाराज हमारे ग्रुप को ऑनलाइन प्रीचिंग आई डू, एंड गुरु महाराज गेव मी अ टारगेट ऑफ 1000 भागवतम सेट्स which we have accomplished every year. We are trying, this year we did 1108 Bhagavatam with 25,000 Bhagavad-Gitas. So this is all my group does,
they are all blessed by Guru Maharaj. So Guru Maharaj ki blessing se, we have done many temples. I assist my husband in the temples also. My color combinations, I do decide with him. So Guru Maharaj loved my color combination. He sent me specially to Ludhiana temple. लुधियाना मंदिर के एक महीना प्रायर ओपनिंग से, अक्टूबर में ओपनिंग है, अगस्त में गुरु महाराज said, Radhika Kripa, can you go to Ludhiana? I said, yes, Guru Maharaj, we'll go tomorrow. He said, you have to decide the color with them. I said, yes, Guru Maharaj, I'll do it. So we went there. So it is, I'm sorry, oh, I can't keep Maharaj Unlimited waiting. mercy from Guru Maharaj to Radhika Kripa Mataji. So I'll just take leave. So thank you very much for listening to me, and it's all glories to Guru Maharaj. Mera kuch bhi nahi hai, it's all Guru Maharaj. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai. Guru Maharaj ki jai. You have unlimited. That's okay. Unlimited time we don't have. Okay? Thank you. Thank you. Thank you. So now, the last speaker for today's session in the morning, and then we'll have part 2. Please come on time. We will also hear from His Holiness Lokanath Swami Maharaj's offering, part 2. So you should be here if you want to hear that. Hare Krishna. Hare Krishna. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम प्रकाश्य व्यतिरिच प्रचारं कृत्वान् साधु भगवत्पादाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की जय। हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण स्वामी तिरुभावती महोत्सव की हरे कृष्णा। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हिज होलिनेस भक्ति अनुग्रह जनार्दन स्वामी महाराज का कि मुझे ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। और आज का दिन मेरे लिए बहुत विशेष है, हम सभी भक्तों के लिए बहुत विशेष है। गुरु महाराज जी का दूसरा तिरुभाव दिवस, और आई एम टू मच ओवरवेल्म्ड। मैं बहुत अप्लावित हो गया हूँ भक्तों के स्नेह से, प्रेम से। इतना बड़ा जिसे कहते हैं सैलाब आया है भक्तों का। महाराज जी का तो उत्सव था। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिज होलिनेस गुरु प्रसाद स्वामी महाराज जिन्होंने आज का शुभ दिन चुना मेरी संन्यास दीक्षा के लिए। सो थैंक यू सो मच महाराज, क्योंकि आज के दिन ही गुरु महाराज का इतना बड़ा मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो मैं सबसे पहले अपना कृतज्ञता प्रकट करना चाहूँगा गुरु महाराज के प्रति, आप सभी भक्तों के प्रति। पहले मैं ये सोचता था कि मेरा एक परिवार है और मैं ISKCON में सेवा करता हूँ, लेकिन आप सब भक्तों के प्रेम को देखकर मुझे लगा कि ISKCON ही मेरा परिवार है। तो इतने भक्तों ने इतना प्रेम दिखाया, और कल से पिछले 2 दिनों से मैं आ गया था वृंदावन में, और उससे पहले भी भक्त जो भी मिलते थे, भक्तों में इतना उत्साह, इतनी खुशी देखी मेरे संन्यास को लेके। मैं हैरान था क्या होने जा रहा है। सब कोई बोल रहे थे हम बहुत एक्साइटेड हैं, हम बहुत एक्साइटेड हैं। तो मैं सोचता था मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही, लेकिन भक्तों के एक्साइटमेंट को देख के मुझे भी कोई एक्साइटमेंट होनी चाहिए। तो मैंने गुरु महाराज से प्रार्थना की, क्या मेरा हृदय इतना कठोर है, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ लग ही नहीं रहा कुछ होने वाला है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का, इतनी दूर दूर से आए। हिज होलिनेस भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज स्पेशली रोके, हिज ग्रेस सावधिक प्रभु स्पेशली मायापुर से आए, हिज ग्रेस सांबा प्रभु स्पेशली विशाखापट्टनम से आए, राधे श्याम प्रभु पुणे से आए, और भी मीरा रोड से भक्त आए, जयपुर से आए, राजस्थान, पंजाब, सब जगह से। महाराज के फंक्शन के लिए आना ही था, फिर भी भक्तों ने अपना शेड्यूल एडजस्ट किया कि किसी ढंग से सुबह सुबह सब ने सेक्रीफाइस किया। कुछ लोग रात को ओवरनाइट जर्नी करके आए। सुबह सुबह का समय ऐसा था, सबको अपना जब भी सेक्रीफाइस करना पड़ा। जपा टाइम में सब ने सेरेमनी में भाग लेके मुझे आशीर्वाद दिया। तो आप सब भक्तों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले और धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो ये मेरा बड़ा परिवार है,
लेकिन इससे पहले मेरे परिवार वाले, मेरे माता पिता का मुझे आज बहुत स्मरण हुआ। कल बहुत एक अच्छे भक्त ने कुछ रिचुअल कराया था जिसमें आप अपने माता पिता को धन्यवाद देते हैं, तो मुझे स्मरण आया, उनकी कृपा से मुझे शरीर मिला। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ISKCON में आके मैं ऐसे गोस्वामी बन जाऊंगा। तो उनका धन्यवाद। मेरी सिस्टर्स भी यहाँ पर हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे भाई साहब भी यहाँ पे हैं और गुरु महाराज की कृपा से सभी दीक्षित हैं और सबके ऊपर गुरु महाराज की कृपा हुई। तो आज मेरा संन्यास दीक्षा हुआ तो मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है गुरु महाराज का, कि गुरु महाराज कितने कंपैशनेट हैं, कितने एक्सपर्ट हैं। एक जो एक्सपर्ट सर्जन होता है वो डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट से भी बहुत अच्छी सर्जरी कर लेता है। एक जो अच्छा शिल्पकार होता है वो बेकार हथौड़े से भी एक पत्थर से अच्छी मूर्ति तराश सकता है। ये गुरु महाराज थे हमारे। तो सन 2001 से मैंने दीक्षा ली, तब से महाराज मुझे पुश करते रहते थे कि आप पंजाबी बाग के पास रहते हो, आपको प्रीचिंग शुरू करनी चाहिए, यूथ प्रीचिंग करनी चाहिए। और मैं बहुत डरता था। तो मैं संडे को आके मैं संडे फीस्ट में उसके बाद प्लेटिंग वगैरह धोता था। मैं सोचा मैं बहुत विनम्र सेवा कर रहा हूँ। और महाराज मुझे जब भी मिलते थे मैं तो भाग जाता था कि महाराज फिर मुझे पुश करते थे। मुझे डर लगता था कैसे प्रीचिंग शुरू कर, मुझे आता नहीं था ज़्यादा। तो फिर एक वरिष्ठ भक्त ने बोला, तुम सोचो तुम बहुत विनम्र सेवा कर रहे हो, गुरु की सेवा करना सबसे बड़ी विनम्रता है। तो मेरी बात छोई। उसके बाद से किसी ढंग से प्रीचिंग शुरू किया। तो 2003 में महाराज पिलानी जा रहे थे, शाम हरि को वहाँ प्रचार करते थे। क्योंकि मैं पिलानी से पास आउट था तो महाराज मुझे पिलानी अपने साथ ले गए। ये इंसिडेंट मैंने कई बार शेयर किया, लेकिन आज के संन्यास दीक्षा के लिए बहुत रेलेवेंट है। तो वापसी हम आ रहे थे 2003 सितंबर में। वापसी में हम बहादुरगढ़ मंदिर पे रुके और जब चल रहे थे तो मेरा घर वहीं पे था दिल्ली में, अगर आप जानते होंगे रोहतक रोड पे मियाँ मणि नगर में। तो मेरी माता जी बहुत बीमार थी, बेड रिडन थी। तो मैंने, और बहुत बिजी थे महाराज को ईस्ट ऑफ कैलाश में स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग थी, वो अटेंड करनी थी, बहुत फ़ोन कॉल्स आ रहे थे। तो मैंने महाराज से निवेदन किया, महाराज मेरी मदर जो है बेड रिडन है, तो आप अपना दर्शन दे देंगे। तो महाराज इतने विनम्र हैं, इतने व्यस्त होते हुए भी, और मैं कुछ साधारण सा भक्त था। महाराज ने मुझे बोला आई एम हेयर टू सर्व द डिवोटीज़। तो मैं एकदम हैरान हो गया। तो मैंने घर में फ़ोन किया कि महाराज आने वाले हैं। तो महाराज आए। तो महाराज ने देखा मेरी माता जी बेड पर लेटी हुई हैं। तो महाराज, मेरी माता जी जानती नहीं थी ये GBC हैं, सन्यासी हैं, गुरु हैं, इतनी बड़ी हस्ती हैं। उन्हें बोला स्वामी जी कोई कीर्तन सुनाओ। और महाराज इतने सिंपल हैं, महाराज ने ताली बजा के हरे कृष्णा गाना शुरू कर दिया। तो देखिए महाराज का। उसके बाद फिर हमारे पास करताल पड़ी थी घर में, तो करताल लेके आए। वो करताल का जो कपड़ा था इतना गंदा था, महाराज ने देखा इसको मैं क्या पकड़ूं। फिर भी महाराज ने वो करताल बजाई, कीर्तन किया, थोड़ी देर बैठे। तो फिर घर वालों ने शिकायत करना शुरू कर दी, ये मंदिर में जाता है रात को बहुत लेट आता है, ऐसा कौन सा मंदिर है रात के 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। क्या करते हैं मंदिर में जाके। बहुत शिकायतें शुरू हो गई। महाराज चुपचाप हंस के सुनते रहे, इसको बोलो शादी करे, ये करे, वो करे, सब बोलते रहे। तो महाराज ने बड़े प्रेम से सब सुनने के बाद जब पूरा गुवार निकल गया तो महाराज बोलते हैं, देखिए हर गुरु चाहता है कि उसका हर शिष्य सन्यासी बने। लेकिन आजकल के शिष्य इतने नालायक हैं, सुनते कहाँ हैं गुरु के। तो ऐसा उत्तर दिया, मुझे भी समझ में नहीं आया, घर वालों को भी समझ में नहीं आया क्या उत्तर है ये। और वहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं। उसके बाद महाराज चल पड़े, सब चले। तो इसके वजह ये घटना थी सितंबर की। उसके बाद फरवरी 2004 में जब पंचतत्व की इंस्टॉलेशन हुई तो मेरी माता जी ने शरीर छोड़ दिया। तो मैं जा नहीं पाया था। तो महाराज किसी काम से दिल्ली वापस आए थे कलकत्ता से। तो मैं उनको एयरपोर्ट पे मिलने गया। तो महाराज ने मुझे सांत्वना दी, ये संसार का नियम है, मृत्यु तो होती है। फिर महाराज ने मुझसे पूछा, क्या अपनी माता जी को आप मंदिर में ले गए थे? तो घर से निकलने से पहले महाराज ने मुझे आज्ञा दी थी कि अपनी जो आपकी बीमार माता जी हैं किसी ढंग से इनको मंदिर में ले जाओ, दर्शन करा दो। और मैं भूल गया था। मैंने अच्छा ले जाऊंगा ऐसे करके भूल ही गया था। मैं भूल गया था, मेरी माँ थी वो बीमार थी, महाराज को याद था। 5 महीने के बाद महाराज ने मुझसे पूछा कि आप अपनी माँ को मंदिर ले गए थे? तो मैं तो रोने लग गया वहाँ पे, मेरी आंखों से, मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। महाराज को याद है इतने व्यस्त होते हुए, और मैं भूल गया। फिर महाराज ने बोले मैं महाराज से भूल गया, कोई बात नहीं, कोई बात, यू आर ए डिवोटी, नो प्रॉब्लम, है ना। ये गुरु महाराज है, गुरु महाराज की जय। इसके अलावा
जब महाराज ने देखा तो मेरे को भक्त लोग उत्साह बढ़ाते थे, क्या नौकरी कर रहे हो, छोड़ दो सब कुछ, आ जाओ। तो उस समय इस प्रकार का प्रचार बहुत होता था। तो मेरे को भी एक दिन बहुत उत्साह आ गया। मैंने एक फ्राइडे में अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया और महाराज को आके बताया कि महाराज मैंने रेजिग्नेशन दे दिया है। वहाँ से हू टोल्ड यू? भक्तों ने बताया, नो गिव बैक योर रेजिग्नेशन। अच्छा महाराज। फिर मैंने रात को फ़ोन किया अपने बॉस को कि मैं रिज़ाइन नहीं कर रहा। तभी मैंने संभाल के रखा था, मंडे को बात करें। तो महाराज ने क्या किया, उससे पहले मैं 1 महीने के लिए राधेश्याम प्रभु के पास ट्रेनिंग में गया था पुणे में। तो महाराज को मालूम था मैं एक अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता हूँ, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छा जॉब है, और ये अभी हवा में रहता है लड़का, है ना, सोचता है ज्वाइन करेगा, अभी योग्य है नहीं, लेकिन इसको कैसे लाना है। तो महाराज राधेश्याम प्रभु से कांस्टेंट टच में रहते थे कि एक डिवोटी भेज रहा हूँ, इसका बहुत ध्यान रखना। ये अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता है, सारी सुविधाएं देना, बढ़िया सा कमरा वगैरह देना। उस समय अगर आप गए होंगे, जो कैंप मंदिर है पूना में, वो शेड में था, अभी तो NVCC बना हुआ है। तो वहाँ मुझे वहाँ का सबसे अच्छा कमरा दिया गया। वो छोटा सा कमरा था, अटैच बाथरूम था। मैं वहाँ जाके रहने लगा। मैंने ठीक है कमरा ओके। और महाराज मुझे बार बार फ़ोन करते थे, सब ठीक है, आपको अच्छा कमरा मिला है, अटैच बाथरूम है। मैं हाँ यस महाराज, एवरीथिंग इज़ ओके फाइन। और राधेश्याम प्रभु से फॉलोअप करते रहते थे। कुछ समय के बाद भक्तों ने बोला, प्रभु कमरा खाली करो। मैं क्यों भाई? कहते गुरु महाराज आ रही है, गुरु महाराज का कमरा है। तो मुझे अपने कमरे में रुकवाया महाराज ने। इतना ध्यान दिया, आप सोचिए कितने सेंसिटिव है महाराज कि कैसे किसको किस लेवल पे लाना है। इसलिए महाराज की बहुत कृपा रही है, बहुत से इंसिडेंट्स हैं। तो मैं तहे दिल से महाराज का धन्यवाद करता हूँ। महाराज मुझे कई बार बोलते थे आप संन्यास के लिए अप्लाई करो, मैं डरता था मैं नहीं कर पाऊँगा। तो 3-4 बोलने के बाद महाराज ने मुझे बोलना छोड़ दिया। और उसके बाद किसी एक भक्त ने बोला 2020 में कि कोरोना भी फैल रहा है, अप्लाई कर दो प्रभु। तो फिर भी मैं डर रहा था। फिर मेरे मित्र ऋषि कुमार प्रभु ने मुझे बहुत पुश किया, तो उन सब की कृपा से मैंने अप्लाई कर दिया। सब भक्तों ने बहुत प्रार्थना की और मुझे पंजाबी बाग मंदिर में हमारे भक्ति माधुर्य गोविंद स्वामी महाराज, वो मुझे बहुत पुश करते थे, उनको भी मैं टालता रहता था। तो उनकी भी मुझे बहुत स्मरण हो रहा है, याद आ रही है। और मैं सभी भक्तों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी यात्रा में सब भक्तों ने बहुत असिस्ट किया। पंजाबी बाग मंदिर में जब मैं आता था तो इसके विजेंद्र प्रभु प्रेसिडेंट होते थे, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। इसके दीनायक प्रभु ने मुझे लाइफ मेंबर बनाया। मेरी बड़ी मूछें होती थी, मेरी मूछें कटवाई उन्होंने। मैं काटता नहीं था, बड़ा फॉलोअप किया उन्होंने। पहली बारी मुझे वो वृंदावन लेकर गए। इसके मोहन प्रभु जी ने मुझे सब कुछ दिया। और भी बहुत से सीनियर भक्त, जीतामित्र प्रभु, राधा दामोदर प्रभु, महामंत्र प्रभु और मेरे मित्र मधु सुंदर प्रभु, इन सब ने बहुत प्रेम दिया और तभी बहुत उत्साह बढ़ा। लेकिन आज और पिछले 2 दिनों से मैंने भक्तों का जो प्रेम देखा, इसके लिए मैं बहुत आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए, मुझे आशीर्वाद देते रहिए। क्योंकि जब से मैंने ये संन्यास लिया, सब बोल रहे हैं कि आशीर्वाद दो, आशीर्वाद। मैं तो वही व्यक्ति हूँ जो पहले था। मैं खुद भिखारी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ। लेकिन अगर मैं आपकी सेवा करके आपके हृदय को प्रसन्न कर सका, तो आपके हृदय से मेरे लिए आशीर्वाद निकलेगा, फिर उसी आशीर्वाद को मैं आपको दे पाऊँगा। तो आज मुझे बताया गुरु प्रसाद महाराज जी ने अपने लेक्चर में कि प्रभुपाद जब 2 सन्यासियों को दीक्षा दे रहे थे, तो उनको याद दिलाया कि कोई भी आपको महाराज बुलाए तो आपको अपने आप को याद दिलाना है कि तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। तो मैं तो मूर्ख ही हूँ, याद क्या दिलाना, मूर्ख ही हूँ। लेकिन ये दिखाता है, मेरा एक लाइव केस है कि कॉजलेस मर्सी क्या होती है भक्तों की और गुरु की। उनकी कृपा से मेरा जैसा व्यक्ति एक्सटर्नली अगर संन्यास वेश में आ सकता है तो कोई भी आ सकता है। बहुत उम्मीद है हम सबके लिए। लेकिन अब ये मुझे वेश प्राप्त हो गया है, अब मुझे हृदय से सन्यासी बनना है। तो आप सब मेरे पे कृपा कीजिए ताकि मैं जो गुरु महाराज की अपेक्षा हैं, जो भक्तों वैष्णव की अपेक्षा है मुझसे, मैं उसको पूरा कर सकूं और एक अच्छा सच्चा सन्यासी बनूं और आप सबके हृदय को, गुरु महाराज के हृदय को प्रसन्न कर सकूं। तो आप सब धन्यवाद। गोपाल कृष्ण महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। Thank you, Maharaj. Actually, Prabhupada says, I want all of my disciples to be sannyasis, both men and women. What does that mean?
spirit of sannyas, to be engaged 24 hours in serving the Supreme Lord, the spiritual master, and the Vaishnavas. That is sannyas. So prepare, everyone. Or maybe you are already sannyas in spirit. So now, next program, we'll have Puspanjali. Would like to request His Holiness Banamali Krishna Karunamai to lead the Mangala Charanam. Is that okay, Maharaj? Please, come. And Maharaj, you do the artik for Guru Maharaj. Huh? So many seniors are there. But you, this is your chance. The sannyasis and Prabhupada's disciples, you go upstairs, Govindas, for prasadam, and senior most disciples of Guru Maharaj, that means 30 years or more in the movement. Temple presidents behind the stage. No, behind the stage. Behind this pandal. This is Oh, behind, way behind, near the kitchen, Maharaj, where is Banamali Swami? You did a Mangala Charanam, okay? Come on. Oh. No, you cannot be there. Just making for you one go. Just 1 second. No. We have to recite the Mangala Charanam first. Rishi? Go that way. Go this way. Go this way. Go this way. Banamali Swami, here's your mic. Hey, you have to guard. Maharaj here. Mangalacharan. श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। तो अभी हम मंगलाचरण का उच्चारण करेंगे। सभी जो है मेरे बाद उच्चारण करेंगे। ओके ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितिर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवात्सभानवि देवी दायिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभुवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाद्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुग विरुदाप सिद्धांत द्वांतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलंबर संबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराभिर्भाव भूमिस्तं निर्दिष्ट सजन प्रिय वैष्णव सर्वभौमा श्री जगन्नाथाय ते नमः। अंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतपंग मम मंदमतेर्गते मत्सर्वसपादवजो राधा मदन मोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद् रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभिसेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशी वटतटस्थितः करसन्वेन सुनेर्गोपी गोपीनाथाय श्रेयस्तुना तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वित्रिय च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय एष पुष्पांजलि एष पुष्पांजलि एष पुष्पांजलि प्रणाम। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितिर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। एष पुष्पांजलि एष पुष्पांजलि एष पुष्पांजलि प्रणाम। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितिर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। एष पुष्पांजलि
His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj ki jai. Risi, bolo. Yes. संसारदावाननलीढलोका त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्रमाध्यन् मनसुरसेना रोमाञ्चकम्पाश्रु तरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् श्रीविग्रहाराधना नित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनादौ युक्तस्य भक्तांश नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् चतुर्विधा श्री भगवत् प्रसाद स्वाद्वन्न तृप्तान् हरिभक्त संघान् कृत्वैव तृप्तिं भजतः सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नाम् प्रतिक्षणास्वादन लोलुपस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् निकुञ्जयूनो रतिकेलिसिद्ध्यै यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्
साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रैर् उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि Mridanga, I mean, I can't hear the mridanga, not this. Dhyayanstuvam stasya yashastri sandhyam vande guru shri charanaravindam. Jaya Bhagavad Pada, Jaya Bhagavad Pada, Jaya Bhagavad Pada, Srila Bhagavad Pada. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva. Namah Vishnu Padaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimate Gopal Krishna Goswami Iti Namine Namah. Prabhupadasya sahityam yaf prakashya vitiryacha pracharam kritvan sadhu bhagavad padayate namaha. Namah Vishnu Padaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda.
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Bhagavad-Pada, Jaya Bhagavad-Pada, Jaya Bhagavad-Pada, Srila Bhagavad-Pada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Nitai Gaur Sitanath Premanande. Jump. Where's the other one? Hare Krishna, Jai Om Vishnuvad Paramahamsa Paribhrajikacharya Ashtotar Sakshi Srimad His Divine Grace Srila Abhay Charana Ravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ke Jai Nichalila Bhavistam Vishnuvad Paramahamsa Paribhrajikacharya Ashtotar Sakshi Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Jai Sri Rup Sri Sanatan Bhataragana Sri Jiva Gopal Bhagavad-Gita Sat Goswami Prabhu Ki Jai Nama Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sita Ho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaura Bhaktavinda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopina Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Sri Brajabhumi Vrindavan Dham Ki Jai Mathura Dham Ki Jai Sri Navadvip Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai, Yamuna Mai Ki Jai, Tulsi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sri Harinam Sankirtan Ki Jai, Sankirtan Yagya Ki Jai, Srila Prabhupada's Transcendental Books Distribution Ki Jai, Samaveda Bhaktabinda Ki Jai, Guru Maharaj Tirubhakti Titi Mahotsab Ki Jai, Nitai Gaur Sitana Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru Sri Gauranga. Another program for the devotees in Delhi. You are most welcome. If it is not as big as this, but it'll be maybe bigger than this. On the 19th of this month, East of Kailas, Vedic Temple, Vedic Cultural Center, East of Kailas. There'll be another observance of second Tirubhakti Mahotsav of Guru Maharaj. हरे कृष्णा। तो याद रखिए 19 तारीख को भी हम लोग गुरु महाराज का तिरुभाव उत्सव बना रहे हैं स्मृति महोत्सव के नाम से। इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली में 19 अप्रैल। आप सब से प्रार्थना है वहाँ ज़रूर पधारिए। गुरु महाराज का गुणगान होगा, उनका स्मरण होगा और अधिक से अधिक फिर से ग्रंथ बटेंगे। हरे कृष्ण। 4:30, please return, come back. We have second session for glorification of Guru Maharaj. For those who are not be able to speak, we will give you your time to do it. Okay? Hare Krishna.